Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. Metaverse is an inevitable digital evolution of the century and one that is rapidly becoming reality. Although it's in its infancy, the metaverse may soon transform our economies, our lifestyles, and our places of work. So, as we dive deep, the metaverse is reshaping the entertainment industry from video games to cinemas and from fashion to theme parks. It is all virtual reality, which is at the helm of what we call the immersive experience, metaverse. So, to discuss all about the entertainment industry and metaverse, we have invited the Chief Business Officer of P2E Pro, Srishti Asudani. Welcome to 3.0 TV. Thank you. Thank you, Vishakha. Thank you so much for having us. It's a pleasure to have you, ma'am. So, global metaverse in entertainment market is forecast to grow by $33.32 million by 2027. Your opening remarks on metaverse and its potential in the entertainment industry. Vishaka, what I feel is that the global metaverse in the entertainment industry, like you've mentioned, is having a huge potential with respect to the market cap that it can contribute to, whether that would be in film production or in OTT platforms or in music labels, any kind of broadcasting. So it has huge potential. Essentially, what we foresee is that the entertainment industry would undergo a huge transmutation with respect to how the content is created, one, and how the engagement is done with the audiences. So I think the underlying principles that the industry is evolving to is essentially that there needs to be an engagement with the fans and the storytelling which is happening either in a 2D mode. Of course, there's being work done in the virtual reality, but it needs to be more immersive, where it can be actually an accessible universe that we can create for the entertainment industry. And there's a lot of contribution of technology in this to actually augment this and get this into reality, where there is of course the technologies like AR, VR, XR, MR, but the 5G computing part of it, the storage part of it, and also the identity which would come with the blockchain. So I feel that this is like a new revolution happening in the entertainment, and this is going to be having huge potential going ahead. So, since you spoke about accessibility, would we see mass adoption of metaverse and entertainment, like especially with prices of VR glasses still being too high for an average consumer? The Meta launched Oculus Quest Pro, and it costs around $1,500. So, yeah. So essentially, of course, the goal of any of the technology, even when we know the potential of it, is only when we can reach to the masses, we can reach to the end consumers. And what we need to understand, which is like a very good sign and a good point, is that the audience is actually ready for this immersive tech, and 70% of them actually want to spend time in the metaverse in the next 2 to 5 years, and that also not from non-gaming environments, because that is essentially a tie-up that people would be spending time in metaverse more in the gaming environment. True. So that's a very positive sign, one. And secondly, specifically in the media and entertainment, nearly around 54% of the end users are wanting to engage in the metaverse environment. So this is again as per one of the Accenture studies. So again, coming to the question of mass adoption and the headgear cost, I think that's of course a bottleneck which the industry is facing. And we at P2E Pro have actually launched our own lab, which is based in Hyderabad, and we are working towards launching our 3DOF VR headset, which is going to be based on a custom OS and would be enabling the virtual streaming on the VR cloud streaming. So we are working towards making it sleek and ergonomic, and using deep technologies like Pancake Lens as the optic technology. So we want to eliminate the dependency that we are having on high compute, and also on the fact that headgear needs to be available to people at a reduced cost. Correct. Without
compromising the photorealistic quality and the experience part of it. So, with India adopting a hard stance on cryptocurrencies, do you think the world's second biggest democracy is a conducive place for the growth of metaverse? Of course, in contrast to countries such as Dubai, which has its own metaverse strategy going on, or Germany or the US. Right. So, you see, we need to understand a couple of things here, Vishaka. So, of course, Dubai has its own para regulations, which is virtual asset regulations, and regulations are quite streamlined in other countries in Europe. And USA is also working towards it, with the Crypto Council paying a huge impact in formulating these frameworks industry wide. And we are all aware of the stance that India has on cryptocurrency. And again, that's based on multiple angles, which are actually important considerations, considering the economy, considering the user base. So what I feel is for metaverse, of course, India would definitely be a good market, because we need to realize that metaverse is as an experience of the internet, which can be, on blockchain or without blockchain. That's one part of it. And even on the blockchain, there's a lot of evolution which is happening, where we can create experiences without involving tokenomics part of it. So this is again one area that we are actually working at. And we are going to launch our own hybrid captive blockchain, which would be a RegTech blockchain, legally compliant as per Indian laws, and solving for the potential gaps that are currently in place for metaverse, and also, the any kind of payment would be done through fiat. So essentially, what I'm saying is that the potential in India is huge. More so because, like you say, it's the biggest democracy, but also that's not the only thing. The user base is phenomenal here, whether it's the gaming users, it's the Gen Z or Gen Alpha. And metaverse is actually unstoppable. It's another universe which people would have to evolve to. Like, you talk about the 1990s, Zoom call would have been unimaginable. I think 5 years down the line, everybody, whether it's an enterprise or it's an end user, would have a presence in the metaverse. So your company P2E Pro is a Web 3.0 deep tech company driving a positive social change. Can you share details on user base, projects, and some other commercial data on your project, of course, including the investments and tie-ups? Right. I think at this stage, what I can share is that we are essentially a deep tech platform, like you mentioned, and we are trying to make it very easy for users to adopt to complex technologies like metaverse and blockchain. So we are trying to make it and simplify it easy for the end users. Our focus, we are making India, and our focus is having an impact in India, making the technology accessible to India. One of the projects that we are working on is creating an infrastructure, providing an infrastructure for the Indian ecosystem to enter the metaverse, enter the Mayaverse, where you can host your metaverses, you can exchange, you can build a community, you can host a franchisee, and all in a Indian, ecosystem, compliant, safe, coherent, abided by regulations, governed by a DAO. Which would be a legally compliant DAO. So these are some of the projects that we're doing, and we're wanting to enable a creator economy here, where it becomes very easy for you to create your content, be present in the next iteration of the World Wide Web, and also have a control on the IP that you're creating. So since you are an early adopter, so what do you think are the advantages for the early adopters of metaverse? I think with like any other technology, where whether it's a cloud computing or it's a quantum computing or the new models of AI which are coming, similar is metaverse and blockchain. So I think the advantages inherently remain the same, that we get to understand the technology more closely. And what is important with any new technology which is coming is the education, the awareness, and then the third part is the impact that it can create. So once you're an early adopter, you understand
the technology very well, you get your ecosystem adopted to it, because it's not about one stakeholder here, right? Well, if it's an enterprise or if it's a user, it's the entire ecosystem that needs to adopt to it and actually use it. Because it would become beneficial only when we engage with the technology, we use it in our daily lives, and we benefit from it. So as an early adopter, you don't miss out on the changes that are happening. You're able to contribute, and of course have an extended advantage with respect to your business models, as well as even the impacts that would come to the top lines. So, tech giants are embracing metaverse, such as Microsoft or Meta, Apple, but now they're shifting their focus to AI. So, what do you have to say about that? I just have to say one thing. I mean, like, just as a starting point, that in 2021, everyone was talking about metaverse. And right now, it's all about AI, AI generative AI hype, which is happening, and everyone around is getting crazy with Chat GTP, and you read articles daily on how Correct, like Kia AI and can Fiat are disrupt. coming with the Chat GPT integrated metaverse where we can buy cars in Mm. metaverse. Yeah, so there are many areas actually how AI can help. So you can have your avatars using AI, where they'll be simulated for certain questions. You can have your digital twins using AI. You can have the chatbots enabled. So there are many ways that AI can actually be used in metaverse, and so that's the actual advantage that would come. It's going to be more adaptive based on the ML models that would be deployed, and of course it will also make the user experience more inclusive, with the use of NLPs in being implemented in the metaverse. So I keep reading various reports. Like today itself, I read a report by Bloomberg Intelligence, and it said that the metaverse is going to be worth $615 billion of market opportunity by 2030. So there are several reports coming up where say that they say that trillions of dollars of market opportunity. So what are your views on this? Like what impact is My it going views to have are, on the economy? yeah, so we really need to understand that, and going back from history and data, that how the internet actually evolved. You'll be aware of that. We came with Netscape, IE, how from a static we moved to dynamic, and now with social, and now we're moving into an immersive Web3. So metaverse, of course, is a terminology which is being used for the Web3 or the next iteration of the internet, and it's being touted as a big $1 trillion economy, $1 trillion opportunity, because of the advantages that it will give going ahead, because of the immersive environments, the engaging environments. So I completely endorse that it's a huge market, and all of us have to play our part in contributing to the commerce which was going to happen in the metaverse going ahead. So what do you think? Is the future of metaverse bright? Absolutely, absolutely. I think it's going to be the next big thing. It's a change which is emerging, evolving, and people are really working on making it impactful, so that what we are the there's one part which is the infrastructure, but there are also other angles of it, whether it's the computing, whether it's the hardware, and like you mentioned, all big players, even other enterprises are working towards making this whole sustainable, and so that the impact to either business models or end consumers can be phenomenal. All right. So thank you so much for being on 3.0 TV, ma'am, and sharing your views and knowledge with our viewers. It was really great having you on the show. Thank you. Thank you so much, Vishaka. Thank you, ma'am. So this was Srishti Asudani, Chief Business Officer of P2E Pro. She shared insights on the future of the entertainment industry in Metaverse. Keep watching 3.0 TV for more such interviews. Do not forget to like, share and subscribe to our channel. And for instant updates, do press the bell icon. This is me, Vishakha Thakur, signing off.
Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. Metaverse is an inevitable digital evolution of the century and one that is rapidly becoming reality. Although it's in its infancy, the metaverse may soon transform our economies, our lifestyles, and our places of work. So, as we dive deep, the metaverse is reshaping the entertainment industry from video games to cinemas and from fashion to theme parks. It is all virtual reality, which is at the helm of what we call the immersive experience, metaverse. So, to discuss all about the entertainment industry and metaverse, we have invited the Chief Business Officer of P2E Pro, Srishti Asudani. Welcome to 3.0 TV. Thank you, Vishakha. Thank you so much for having us. It's a pleasure to have you, ma'am. So, global metaverse in entertainment market is forecast to grow by $33.32 million by 2027. Your opening remarks on metaverse and its potential in the entertainment industry. Vishakha, what I feel is that नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। स्वागत है आपका 3.0 टीवी के इस खास एपिसोड में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कौन नहीं जानता। वेब 3 जगत की सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी ने सभी क्षेत्रों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ केयर या चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो। बहुत से लोग अभी भी मानते हैं कि ब्लॉकचेन केवल डिजिटल एसेट्स के ट्रांजैक्शंस को हैंडल और मैनेज करने में सक्षम है। कुछ का यह भी मानना है कि यह केवल BFSI इंडस्ट्री यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ही उपयोगी है, पर ऐसा नहीं है। विभिन्न इंडस्ट्रीज के बिजनेसेस विभिन्न एप्लीकेशंस पर ब्लॉकचेन की क्षमता का एक्सपेरिमेंट और लेवरेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सभी एक्सपेरिमेंट के बाद इस टेक्नोलॉजी ने मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी अपना अहम योगदान दिया है। जैसे कि हम सब जानते हैं, यह सबसे ज्यादा हाई एसोसिएटेड वैल्यू इंडस्ट्री है जिसे पूरी दुनिया यूज करती है। इसलिए इससे जुड़ी सभी चीजें भी सिक्योर होनी बहुत जरूरी है। इसलिए खासकर व्हीकल ओनरशिप की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमर्स, अथॉरिटीज के मैनुअल और रिपीटेटिव टास्क पूरी तरह से कम होंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। व्हीकल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हमेशा से ही जटिल रही है। यह एक समय लेने वाली प्रोसेस है जिसमें कई पार्टीज शामिल होते हैं और साथ ही इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, डेटा डुप्लीकेशन जैसे कई तरह के एरर्स का भी रिस्क होता है। ऐसे में इस पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर लाया जाए तो इन सब इश्यूज को आसानी से कम किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से पार्टीज अपने डेटा को एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे, जो अंततः सभी पार्टियों के लिए इमिटेबल डेटा का सिंगल सोर्स बन जाएगा। इतना ही नहीं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन इकोसिस्टम में भी ये टेक्नोलॉजी धोखाधड़ी और हमलों के जोखिम को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि अब डेटा अपडेट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कीज के माध्यम से ही एक्सेस होगा, जिसे ऑथोराइज पर्सनल द्वारा ही यूज किया जाएगा। चलिए हम इसे और इजी करते हैं। पहले व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में शामिल वेरियस स्टेक होल्डर्स की भूमिकाओं को समझते हैं और साथ ही कुछ बेसिक वर्कफ्लो को भी देखते हैं और समझते हैं कि ब्लॉकचेन का उपयोग कर उन्हें कैसे सरल बनाया जा रहा है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर जो मेक, मॉडल, वेरिएंट, चैसी नंबर, इंजन नंबर जैसे बेसिक डिटेल्स जोड़कर व्हीकल को ब्लॉकचेन में पुश करेगा और व्हीकल सेल के लिए रेडी करेगा। फिर डीलर एंड कस्टमर्स को व्हीकल सेल करेगा। इंश्योरेंस एजेंसी फिर कस्टमर और व्हीकल डेटा को वैलिडेट कर इंश्योरेंस इशू करेगी। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी RTO रजिस्ट्रेशंस को मंजूरी देगा और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करने और साथ ही व्हीकल ट्रांसफर और रीसेल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर पुलिस व्हीकल सेल और ट्रांसफर के लिए क्लियरेंस देगी। सर्विस सेंटर, जॉब कार्ड और पार्ट रिप्लेसमेंट जैसे सर्विसेज डिटेल्स जोड़ेगी। फाइनली कस्टमर या कार ओनर्स पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान को मंजूरी देंगे। अब देखते हैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से मैन्युफैक्चरर डीलर का वर्कफ्लो किस तरह से होगा। तो मैन्युफैक्चरर मेक, मॉडल, वेरिएंट, चेसी नंबर, इंजन नंबर जैसे बेसिक डिटेल्स को जोड़कर ब्लॉकचेन नेटवर्क में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नए व्हीकल्स को जोड़ेगा। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर डीलर को व्हीकल सेल करेगा और ऑटोमेटिकली डीलर को ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। अब आइए देखते हैं व्हीकल सेल और रजिस्ट्रेशन वर्कफ्लो किस तरह से होगा। पहले डीलर व्हीकल सेल कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करेगा, फिर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा
आरटीओ और इंश्योरेंस एजेंसी ब्लॉकचेन से व्हीकल और कस्टमर के बारे में आवश्यक डेटा को वैलिडेट कर रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। पूरी प्रोसेस सक्सेस होने के बाद व्हीकल ओनरशिप ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा कस्टमर को ट्रांसफर की जाएगी। आइए अब देखते हैं व्हीकल ट्रांसफर वर्क फ्लो किस तरह से होगा। पहले व्हीकल ओनर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एनओसी के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट संबंधित अथॉरिटीज को एनओसी और क्लियरेंस के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। ब्लॉकचेन से इंफॉर्मेशन के सक्सेसफुल वैलिडेशन के बाद कंसर्न अथॉरिटीज एनओसी प्रदान कर सकेंगे, जिसका उपयोग एक नया रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। अब देखते हैं व्हीकल रीसेल का वर्क फ्लो किस तरह से होगा। व्हीकल ओनर व्हीकल के रीसेल के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट संबंधित अथॉरिटीज को एनओसी और मंजूरी के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। सक्सेसफुल क्लियरेंस के बाद एक नए ओनर को ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होने वाले व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की पूरी जानकारी। वही अगर बात करें कैलिफोर्निया की, तो डिजिटल रूप से प्रगतिशील अमेरिका की इस स्टेट ने पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मोटर व्हीकल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। कैलिफोर्निया की डीएमवी, जिसके पास यूनाइटेड स्टेट्स में कार रजिस्ट्रेशन की संख्या सबसे अधिक है, कार के टाइटल्स और रजिस्ट्रेशंस को वैलिडेट करने के लिए टेजॉस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। इसलिए वे एक क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ऑक्सहेड अल्फा के साथ मिलकर काम भी कर रही है। अब इसके बाद पेपर कार टाइटल एक प्राइवेट डीएमवी संचालित ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल एसेट्स बन जाएगी, जिससे टाइटल ट्रांसफर प्रोसेस आसान हो जाएगी। ऑक्सहेड अल्फा के अध्यक्ष एंड्रू स्मिथ ने कहा कि टेजॉस ब्लॉकचेन तकनीक को इसकी इंस्टीट्यूशनल ग्रेड सिक्योरिटी, सोफिस्टिकेटेड गवर्नेंस मॉडल और एनर्जी एफिशिएंट कंसेंसस एल्गोरिदम के कारण चुना गया था। इस तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में क्रांतिकारक बदलाव ला रही है, जिससे हमारी लाइफ और भी ज्यादा इजी और सिक्योर हो गई है। तो आज बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। We will keep you connected to the evolving world of NFTs. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. The ghost of the financial reserve banking have returned to haunt the US banking system. The recent victim behind the Silicon Valley Bank, SVB, that brought back the memories of the disastrous financial crisis of 2008. SVB is the second biggest US financial institution to have failed in history. Before analyzing the SVB failures, let's understand one fundamental change to US banking which was carried out to provide a freedom. Yes, we are talking about the fractional reserve banking. So, as the name suggests, it is a system of bank management of a holding of fractional of deposits in a deposit form while majority funds are invested or loaned out to the borrowers. The financial reserve banking is a threat of a bank run. Previously, the banks operated with the full reserves, which is actually they held 100% of the deposited funds in reserves. On March 15, 2020, the Federal Reserve abolished the reserve requirements for all depository institutions, enabling banks to lend out 100% of the deposits and guaranteeing risk-free profits. Which is, while we come back to the SVB issue, the now failed bank has approximately $209 billion in total assets and about $175.4 billion in the total deposits as on December 31st, 2022.
as the US Fed resorted to a 0% interest rate regime for an extended time, buying mortgage-backed securities. The next important factor to this function became the preferred investment choice, SVB Bank. The lender generated enormous funds from the startup, of which $90 billion was parked in MBS. Interesting. It is at this point the Fed looked to turn 0% interest rate trajectory, and it started hiking interest rates, which resulted in MSB yields much lower rate than the market rates. SVB was sitting at a notional loss of over $15 billion to $90 billion investments. And since startup funding slowed down, deposits grew to stumble, and which is aimed amid slow inflows, the SVB started feeling the pinch from the fund withdrawals. With a large number of depositors simultaneously demanding their deposits back, the banks suffered from the liquidity crunch. The fear of contagion was more evident than the previous though several startups started demanding deposits money back. Circle's deposit, which stood at $3.3 billion with SVB, and some other holdings deposits with SVB are BlockFi, Circle, Pantera, Avalanche, Yuga Labs, Proof, Nova Labs, to name few. The tech lenders' collapse have left several startups and tech firms in the US globally and also in India who have exposure to the SVB's investment, which is actually worrying the entire global fraternity. As a percentage data of the market intelligence platform Traxon, SVB had exposure in at least 21 startups in India. The size of investments and the exact details of the startups which are not mentioned yet, but SVB was a bank to over 2,500 venture capitalist firms, which included the likes of Lightspeed, Bain Capital, and Insight Partners, as per the New York Times. The SVB also managed the personal wealth of several tech executives. The California regulator, which shut down SVB, has said that the insured depositors will have full access to their insured deposits no later than Monday, March 13, 2023. Deposits of up to $250,000 were insured by the regulator, and beyond that, customers will receive no information on when they will regain access to their money. The regulators have put SVB under the control of US Federal Deposit Insurance Corporation, which is FDIC. It is acting as a receiver. This typically means that it will liquidate SVB's assets to pay back its customers, including depositors and creditors. That's all there is in this special story. Keep watching 3.0 TV for more such interesting updates on the SVB issue. Thank you. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. As we all know, the world of metaverse is indeed changing our lives for the better. According to various reports, metaverse is expected to impact various industries in numerous ways in the coming years, with potential market opportunity estimated to be more than $1 trillion in yearly revenues. Like Mark Zuckerberg of Meta believes, metaverse has the potential to revolutionize the way we live and work. More and more countries and industries have started exploring the various aspects of this new technology impacting our lives, and the latest to join the bandwagon is the legal world. Yes, the world of virtual reality has taken a big leap forward, as recently the lawmakers in Colombia's Magdalena Administrative held a successful court hearing in Meta's Metaverse platform. The lawyers and participants related to a traffic dispute appeared as avatars in a virtual courtroom. The country is among the earliest worldwide to test real legal hearings in the metaverse. The hearing was conducted in Spanish, with the Colombian magistrate reportedly instructing participants to secure Oculus Quest 2 eyeglasses and configure their avatars in advance. However, those without access to VR headsets had the option to take part via a standard video call.
The magistrate instructed participants to enter a verification code to prove their identities and ordered regular breaks during the proceedings. Well, this is not the first time a court hearing has been conducted in Meta's metaverse. Courts around the world seem to be embracing new technologies. In September, Siming District Court in Xiamen, China reportedly heard 2 cases in the metaverse. Also, the South American country passed legislation last year enabling the use of emerging technologies in judicial proceedings. Well, virtual court hearings are just one example of how metaverse could be used in the future. It has the potential to revolutionize not just the legal system but also education, entertainment, and social interactions. The successful court hearing in Colombia is a promising sign for the future of metaverse. As technology continues to advance, it is likely that we will see more and more applications of virtual reality in various aspects of our lives. That's all in the story. This is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such updates, keep watching 3.0 TV. Do like, share, and subscribe to our channel. Well, the deliberation over crypto regulations remain an unfinished agenda at the G20 summit with little concrete outcome due to the lack of groundwork or conformity among the group participations. The decisions is delayed till July. There was a seminar on policy perspectives debating the road to policy consensus on cryptocurrencies. This seminar was also of great interest for most members who participated. That was held on 23rd February. It was to deepen the discussion around crypto assets and to foster better understanding of the broader implications of crypto assets. UK and USA, I'm grateful again for being very supportive on the global coordination framework, particularly on the crypto. However, the process to regulate cryptocurrency is shaping in Hong Kong with the support of China. Hong Kong, the island region which enjoys autonomous status despite being part of China, will soon introduce new crypto regulations and triumph over other budding cities such as Dubai. After formulating regulations, Hong Kong will fully open its doors to crypto assets trading and investments. Its focus will be on establishing a licensed regime for the crypto service providers. The move will boost Hong Kong's reputation as a financial hub and make it an attractive destination for the global crypto companies seeking to expand their presence in Asia, and which has actually sparked interest among the crypto communities globally. Experts believe that it will attract capital and talent to Asia, making it a hub for the crypto industry. The Hong Kong's new crypto regulations presents several opportunities for the entire globe. It allows retail investors to participate in the crypto market, which was earlier a den of institutional investors and HNIs. Further, it creates a level playing field for all investors, leading to increasing market liquidity and improving price discovery mechanism, which is actually the most important thing for the markets. The city's strong legal framework and supportive regulatory environment could encourage crypto companies to set up shops in Hong Kong, bringing job opportunities and economic growth to the region. The decision would also lead Hong Kong to become a leader in the green finance. The authorities have expressed interest in launching tokenized green bonds from institutional investors, which is actually a big positive sign. Alongside the opportunities, the new crypto regulations also comes with fair share of risk, such as potential for increasing market volatility and the risk of the crypto scams. Not to mention the potential for the regulatory arbitrage. Justin Sun's crypto exchange Huobi Global applied for a crypto trading license in Hong Kong. So, the public interest remains elevated despite the ongoing crypto winter. Expansion of investor base in the cryptocurrencies
or listing of new projects in the NFT markets proves that be it retail or the institutional investors, the interest and the commitment for the digital assets stay upbeat. Thank you so much for watching this special story on 3.0 TV. I am Manoj Zara signing off. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। स्वागत है आपका 3.0 टीवी के इस खास एपिसोड में। वेब3 की दुनिया के माध्यम से हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे साथ साथ प्रकृति और वसुंधरा के हित में भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से पर्यावरण पर हो रहे घातक परिणाम को भी रोका जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडस्ट्रीज से हो रहे कार्बन उत्सर्जन की। बढ़ते तापमान, पिघलती बर्फ की चोटियां और खराब मौसम की वजह से पूरे विश्व पर ग्लोबल वार्मिंग के काले बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से हो रही तबाही से हम सभी भली भांति परिचित हैं। ये सब पर्यावरण में बड़ी मात्रा में छोड़े जा रहे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे केमिकल्स की वजह से ही हो रहा है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए यूरोपियन कमीशन और यूनाइटेड नेशंस ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू कर दिया है। वही अगर बात करें टॉप 6 कार्बन क्रेडिट एक्सचेंजेस की, तो इनमें कार्बन ट्रेड एक्सचेंज, एक्सपांसिव, टोकन प्रोटोकॉल, एयर कार्बन एक्सचेंज, कार्बन एक्सपर्ट रोमानिया और टेक्सास क्लाइमेट एंड कार्बन एक्सचेंज सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट मार्केट को लेकर ग्लोबली अगर बात करें तो 2021 में कार्बन क्रेडिट मार्केट का मूल्य 760.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स था और 2023 से 2028 की फोरकास्ट पीरियड के दौरान 21.14% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एनर्जी यूसेज का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ब्लॉकचेन को अपनाने के कई इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस भी है। इसी विषय को गंभीरता से लेकर अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो क्लाइमेट चेंज के साथ साथ इस घातक कार्बन को भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले कार्बन क्रेडिट का क्रिएशन और मैनेजमेंट। कार्बन क्रेडिट का क्रिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा तरीका है जिससे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद कर सकती है। एक ट्रेडेबल परमिट को कार्बन क्रेडिट कहा जाता है, जिससे होल्डर को एक सर्टेन अमाउंट में ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने के लिए अलाउ किया जाता है। उत्सर्जन को कम करने के लिए बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं, जिसका मार्केट में व्यापार भी किया जा सकता है। ब्लॉकचेन के उपयोग से कार्बन क्रेडिट का मैनेजमेंट अधिक ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव हो सकता है। सभी कार्बन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है और डिसेंट्रलाइज्ड लेजर का उपयोग कर ट्रैक भी किया जा सकता है। ऐसा करने से धोखाधड़ी से भी बचा जा सकता है। अब देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकती है। एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या यूटिलिटी कंपनी भी सहायता के बिना लोग और कंपनियां एक डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी ग्रिड का उपयोग कर एक दूसरे से रिन्यूएबल एनर्जी खरीद या बेच सकते हैं। यह सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को अपनाने में भी मदद कर सकता है और फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता को भी कम कर सकता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी कई मामले में सुधारा जा सकता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक अन्य क्षेत्र है जहां क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। बिजनेसेस को अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और सप्लाई चेन में प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स के कार्बन फुटप्रिंट को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से सस्टेनेबल डिसीजंस लेने के अवसर मिल सकते हैं। सस्टेनेबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफी कम भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ कार्बन उत्सर्जन की निगरानी और रिपोर्टिंग का मामला भी सुलझ सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बिजनेसेस, व्हीकल्स और स्ट्रक्चर्स जैसे कई सोर्सेस से कार्बन उत्सर्जन की निगरानी और रिपोर्टिंग भी की जा सकती है। गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर का उपयोग कर अपने उत्सर्जन पर अधिक सटीक मेजरमेंट
और रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्टैंडर्डाइजेशन और कंपैटिबिलिटी की आवश्यकता एक कठिनाई हो सकती है। ब्लॉकचेन को रूल्स और प्रोटोकॉल्स के एक समान सेट की आवश्यकता होती है, जिस पर कार्बन क्रेडिट को मैनेज करने और उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स की सहमति जरूरी होती है। इसको लेकर अड़चनें भी आ सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की स्केलेबिलिटी एक और डिफिकल्टी हो सकती है। कई ब्लॉकचेन नेटवर्क पर आमतौर पर केवल एक मामूली मात्रा में क्षमता होती है और केवल कुछ ही ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस किया जा सकता है। यदि कार्बन क्रेडिट या उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाए तो यह एक अड़चन भी बन सकती है। कुछ भी हो, पर क्लाइमेट चेंज जैसे वैश्विक संकट को रोकने के लिए इस तरह की कठिनाइयां और बाधाओं को दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तभी समूचा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से छुटकारा पा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सारी प्रक्रिया में निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.OTV। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। स्वागत है आपका 3.OTV के इस खास एपिसोड में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कौन नहीं जानता। वेब3 जगत की सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी ने सभी क्षेत्रों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ केयर या चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो। बहुत से लोग अभी भी मानते हैं कि ब्लॉकचेन केवल डिजिटल एसेट्स के ट्रांजैक्शंस को हैंडल और मैनेज करने में सक्षम है। कुछ का यह भी मानना है कि यह केवल BFSI इंडस्ट्री यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ही उपयोगी है, पर ऐसा नहीं है। विभिन्न इंडस्ट्रीज के बिजनेसेस विभिन्न एप्लीकेशंस पर ब्लॉकचेन की क्षमता का एक्सपेरिमेंट और लेवरेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी एक्सपेरिमेंट के बाद इस टेक्नोलॉजी ने मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी अपना अहम योगदान दिया है। जैसे कि हम सब जानते हैं, यह सबसे ज्यादा हाई एसोसिएटेड वैल्यू इंडस्ट्री है जिसे पूरी दुनिया यूज करती है। इसलिए इससे जुड़ी सभी चीजें भी सिक्योर होनी बहुत जरूरी है। इसलिए खासकर व्हीकल ओनरशिप की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमर्स, अथॉरिटीज के मैनुअल और रिपीटेटिव टास्क पूरी तरह से कम होंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। व्हीकल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हमेशा से ही जटिल रही है। यह एक समय लेने वाली प्रोसेस है जिसमें कई पार्टीज शामिल होते हैं और साथ ही इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, डेटा डुप्लीकेशन जैसे कई तरह के एरर्स का भी रिस्क होता है। ऐसे में इस पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर लाया जाए तो इन सब इश्यूज को आसानी से कम किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से पार्टीज अपने डेटा को एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे, जो अंततः सभी पार्टियों के लिए इमिटेबल डेटा का सिंगल सोर्स बन जाएगा। इतना ही नहीं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन इकोसिस्टम में भी ये टेक्नोलॉजी धोखाधड़ी और हमलों के जोखिम को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि अब डेटा अपडेट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कीज के माध्यम से ही एक्सेस होगा, जिसे ऑथोराइज पर्सनल द्वारा ही यूज किया जाएगा। चलिए हम इसे और इजी करते हैं। पहले व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में शामिल वेरियस स्टेक होल्डर्स की भूमिकाओं को समझते हैं और साथ ही कुछ बेसिक वर्कफ्लो को भी देखते हैं और समझते हैं कि ब्लॉकचेन का उपयोग कर उन्हें कैसे सरल बनाया जा रहा है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर जो मेक, मॉडल, वेरिएंट, चैसी नंबर, इंजन नंबर जैसे बेसिक डिटेल्स जोड़कर व्हीकल को ब्लॉकचेन में पुश करेगा और व्हीकल सेल के लिए रेडी करेगा। फिर डीलर एंड कस्टमर्स को व्हीकल सेल करेगा। इंश्योरेंस एजेंसी फिर कस्टमर और व्हीकल डेटा को वैलिडेट कर इंश्योरेंस इशू करेगी। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी RTO रजिस्ट्रेशंस को मंजूरी देगा और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करने और साथ ही व्हीकल ट्रांसफर और रीसेल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर पुलिस व्हीकल सेल और ट्रांसफर के लिए क्लियरेंस देगी। सर्विस सेंटर जॉब कार्ड और पार्ट रिप्लेसमेंट जैसे सर्विसेज डिटेल्स जोड़ेगी।
फाइनली, कस्टमर या कार ओनर्स पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान को मंजूरी देंगे। अब देखते हैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से मैन्युफैक्चरर डीलर का वर्क फ्लो किस तरह से होगा। तो मैन्युफैक्चरर मेक, मॉडल, वेरिएंट, चेसी नंबर, इंजन नंबर जैसे बेसिक डिटेल्स को जोड़कर ब्लॉकचेन नेटवर्क में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नए व्हीकल्स को जोड़ेगा। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर डीलर को व्हीकल सेल करेगा और ऑटोमेटिकली डीलर को ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। अब आइए देखते हैं व्हीकल सेल और रजिस्ट्रेशन वर्क फ्लो किस तरह से होगा। पहले डीलर व्हीकल सेल कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करेगा, फिर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। आरटीओ और इंश्योरेंस एजेंसी ब्लॉकचेन से व्हीकल और कस्टमर के बारे में आवश्यक डेटा को वैलिडेट कर रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। पूरी प्रोसेस सक्सेस होने के बाद व्हीकल ओनरशिप ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा कस्टमर को ट्रांसफर की जाएगी। आइए अब देखते हैं व्हीकल ट्रांसफर वर्क फ्लो किस तरह से होगा। पहले व्हीकल ओनर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एनओसी के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट संबंधित अथॉरिटीज को एनओसी और क्लियरेंस के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। ब्लॉकचेन से इंफॉर्मेशन के सक्सेसफुल वैलिडेशन के बाद कंसर्न अथॉरिटीज एनओसी प्रदान कर सकेंगे, जिसका उपयोग एक नया रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। अब देखते हैं व्हीकल रीसेल का वर्क फ्लो किस तरह से होगा। व्हीकल ओनर व्हीकल के रीसेल के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट संबंधित अथॉरिटीज को एनओसी और मंजूरी के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। सक्सेसफुल क्लियरेंस के बाद एक नए ओनर को ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होने वाले व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की पूरी जानकारी। वही अगर बात करें कैलिफोर्निया की, तो डिजिटल रूप से प्रगतिशील अमेरिका की इस स्टेट ने पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मोटर व्हीकल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। कैलिफोर्निया की डीएमवी, जिसके पास यूनाइटेड स्टेट्स में कार रजिस्ट्रेशन की संख्या सबसे अधिक है, कार के टाइटल्स और रजिस्ट्रेशंस को वैलिडेट करने के लिए टेजॉस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। इसलिए वे एक क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ऑक्सहेड अल्फा के साथ मिलकर काम भी कर रही है। अब इसके बाद पेपर कार टाइटल एक प्राइवेट डीएमवी संचालित ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल एसेट्स बन जाएगी, जिससे टाइटल ट्रांसफर प्रोसेस आसान हो जाएगी। ऑक्सहेड अल्फा के अध्यक्ष एंड्रू स्मिथ ने कहा कि टेजॉस ब्लॉकचेन तकनीक को इसकी इंस्टीट्यूशनल ग्रेड सिक्योरिटी, सोफिस्टिकेटेड गवर्नेंस मॉडल और एनर्जी एफिशिएंट कंसेंसस एल्गोरिदम के कारण चुना गया था। इस तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में क्रांतिकारक बदलाव ला रही है, जिससे हमारी लाइफ और भी ज्यादा इजी और सिक्योर हो गई है। तो आज बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.o TV। ये गाना है तो फिल्मी, लेकिन ये एक चेतावनी के तौर पर बजाया जा रहा है। कहानी इंटरेस्टिंग है, इसलिए जरा गौर से सुनिए। बंटी और बबली, घोंसला का घोंसला, धूम 1, धूम 2, धूम 3, बदमाश कंपनी, द स्टिंग, द इटालियन जॉब। इन सब मूवीज में एक बात कॉमन है, ये मूवीज चोर अर्थात कॉन आर्टिस्ट के बारे में है। और आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसे ही क्रिप्टो कॉन आर्टिस्ट के बारे में है। तो हुआ यूं कि यूरोप में कुछ कॉन आर्टिस्ट ने ऐसा गदर मचाया, जिसके चलते विक्टिम्स के लाखों डॉलर्स उड़ गए। ये चोर रात के अंधेरे में नहीं आते, नो सर। ये कॉन आर्टिस्ट दिन दहाड़े सूट पैंट और टाई पहनकर आपसे 5 स्टार होटल की लॉबी में या फिर किसी पॉश रेस्टोरेंट में मिलते हैं और पलक झपकते ही आपका पैसा चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर होटल या रेस्टोरेंट से कैसे जा सकता है? तो फिर ये कौन होता कैसे है?
कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे कॉन आर्टिस्ट की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक चोरों की टोली वेब3 वर्ल्ड के ऐसे इन्वेस्टर्स को टारगेट करती है जो किसी स्टार्टअप में पैसा लगाकर मल्टीफोल्ड रिटर्न कमाना चाहते हैं। उनके लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, एक ऐसा समा बनाया जाता है जिससे कि इन्वेस्टर को लगे कि अगर उसने कॉन आर्टिस्ट की स्कीम में इन्वेस्ट नहीं किया तो उसके हाथ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। फिर इन्वेस्टर से डिजिटल वॉलेट में प्रूफ ऑफ फंड की मांग की जाती है, जैसा कि वेब3 मेटावर्स गेमिंग इंजन वेबावर्स के को-फाउंडर अहाद शम्स के साथ रोम के एक होटल लॉबी में हुआ। इन कॉन आर्टिस्ट ने शम्स को $4 मिलियन क्रिप्टो में एक ट्रस्ट वॉलेट में शिफ्ट करने को कहा। वो वॉलेट शम्स ने खुद सेट किया था, इसीलिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर भी जब वो मीटिंग से उठकर घर आए तब तक उनके खुद के वॉलेट से $4 मिलियन गायब हो चुके थे। ऐसा ही अनुभव यूके बेस्ड क्रिप्टो फोकस पब्लिशिंग और डेटा सर्विसेज कंपनी कॉइन पब्लिशर के को-फाउंडर मिस्टर हंटर के साथ हुआ। वो अपने स्टार्टअप के लिए $2.2 मिलियन रेज करना चाहते थे। कॉन आर्टिस्ट ने उससे कहा कि वो एक वेल्थ मैनेजर है और एक रिच पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। वो हंटर को $2.2 मिलियन दिला देगा, बदले में उन्हें 10% कमीशन यानी कि ओवर $200,000 बिटकॉइन में देने होंगे। डील की लालच में उन्होंने $206,000 के बिटकॉइन को अपने एक्सोडस वॉलेट में ट्रांसफर किया, लेकिन फेस टू फेस मीटिंग के बाद जब वो घर आए तब उनके वॉलेट से पैसे उड़ चुके थे। हंटर और शम्स की तरह दुनिया के अलग अलग कोने में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिसमें सिमिलरली इन कॉन आर्टिस्ट ने लोगों को लाखों करोड़ों का चूना लगा दिया है, लेकिन कई लोग शर्म की वजह से खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, इसीलिए एग्जैक्ट अमाउंट का पता लगा पाना मुश्किल है। अब जब लुट ही गए हैं तो बताने में कैसी शर्म। खैर, जो भी हो, आज तक विक्टिम्स और जांच एजेंसीज भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये लोग दूसरों के वॉलेट से पैसे कैसे ड्रेन कर रहे हैं। कोई कहता है कि वो जहां मिलते हैं शायद वहां सीक्रेट कैमरा था जिसके थ्रू उन्होंने वॉलेट का सीड फ्रेज यानी कि पासवर्ड क्लिक कर लिया था। तो कोई कहता है कि एक कॉन आर्टिस्ट हिप्नोटिस्ट या मेंटलिस्ट हैं जो लोगों को सम्मोहित करते हैं, उनसे वॉलेट का सीड फ्रेज उगलवा लेते हैं या उनका माइंड रीड कर लेते हैं। ऐसे चोर 2018 से दुनिया के अलग अलग देशों में एक्टिव हैं और अभी तक हाथ नहीं आए हैं। अपनी लेजिटिमेसी प्रूफ करने के लिए ये चोर लिंक्डइन जैसी वेबसाइट पर अपने प्रोफाइल बनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड लिंक्डइन ने अपनी वेबसाइट से 32 मिलियन फेक अकाउंट्स डिलीट कर दिए थे। ऐसे स्कैमर्स से बचने के लिए कभी भी अपने डिजिटल वॉलेट को लेकर अननोन लोगों से मिलने ना जाएं। अपने वॉलेट की सी फेस को अपने लव्ड एंड ट्रस्ट वंस के अलावा किसी से भी शेयर न करें। हम उम्मीद करते हैं कि जो हाल शम्स और हंटर का हुआ वो किसी का ना हो। इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 टीवी। Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Shubham Joshi. Bitcoin and other cryptocurrencies performed exceedingly well in 2023. They aren't the only ones who have done well. In fact, Bitcoin offshoots have fared far better. We are discussing Bitcoin mining. Have you ever heard of Bitcoin mining? Well, let's understand. Bitcoin mining is a process of creating new Bitcoins by solving complicated math problems that verify transactions in the currency. It is an energy-intensive process in which miners use hundreds of thousands of powerful specialized computers to secure the Bitcoin blockchain. In simple terms, it is basically facilitating between buyers and sellers on the Bitcoin blockchain in the most cost-efficient manner. But why are we discussing this? Well, it has recently been discovered that mining stocks are on the rise, and just not that. Bitcoin mining stocks have performed, and how? Some of them have outperformed the primary cryptocurrency Bitcoin itself. Analysts were quick to spot the trend. On March 1st, Bitcoin mining analyst Jaran Mellerud posted an update on Bitcoin mining stock performance. His findings revealed that 20% of Bitcoin mining stocks were ahead of the asset's gain in February.
all but one have outperformed the Nasdaq he mentioned. Among these Bitcoin mining stocks, Iris Energy was the top performing mining stock in February with a gain of 29%. The research further discovered that most of the gains came mid-month when the Australian firm announced the purchase of 4.4 exahashes worth of mining rigs from Bitmain. Cipher Mining was a close second in February with a gain of 27%. The Texas Miner Company saw huge gains at the start of the month following positive expansion updates in January. Spear 3D Corp, Cathedra Bitcoin Incorporation and Stronghold Digital Mining Incorporation also outperformed Bitcoin in February with a gain of 7 to 11%. It has also been observed that Bitcoin network's hash rate is near its peak levels, which is observed to be good for security, but not so much for miners competing for the next block. Well, you must be wondering, first I said mining stocks and now hash rate. What is this hash rate? Well, hash rate refers to the computing power being used by a network, for example, the Bitcoin network, to process transactions. Determining hash rate can help investors gauge the health and security of a cryptocurrency's network. According to data from BitInfo charts, the average network hash rate is currently at 327 exahashes per second. However, peaked in late February as new machines found their way online to secure this network. Coming back to stocks' performance, if they manage to keep up the good work, it is possible that going forward it would translate some of the gains in Bitcoin as well. Well, that's all there is in today's special segment. Keep watching 3.0 TV for more such interesting updates. Have a great day. ग्रोसरी की खरीदारी करते वक्त इस गाने के बोल जरूर आपको भी सुनाई देते होंगे, लेकिन तेजी से बदल रही टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस फिक्र यानी गोलमाल को भी खत्म कर दिया है। आज के स्पेशल सेगमेंट में हम ग्रोसरी चेन में ब्लॉकचेन के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सब तो ठीक चल रहा है, फिर ग्रोसरी में ब्लॉकचेन के इस्तेमाल को यानी इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है? तो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट ऑल इज नॉट वेल। ग्रोसरी इंडस्ट्री के बारे में IBM फूड ट्रस्ट से मिले कुछ फिगर्स आपके सामने मैं रखना चाहूंगा जो आपको चौंका भी देंगे। फूड एंड ग्रोसरी रिटेल मार्केट शेयर एंड ट्रेंड एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल फूड एंड ग्रोसरी इंडस्ट्री का मार्केट शेयर 2022 में $11.68 ट्रिलियन था। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, जो कि एक बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है जिससे ग्लोबल ग्रोसरी इंडस्ट्री मार्केट शेयर 25% बढ़ेगा 2030 तक। एक और रिपोर्ट मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक राइजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट और फियर्स कंपटीशन के कारण 2012 से अब तक ग्रोसरी सेक्टर का 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट डिसअपीयर हो गया है। एमवे ने एक पोल किया था जिसके अनुसार 63% लोगों का कहना है कि वो लोग रिस्पॉन्सिबली मेड और ट्रांसपेरेंटली सोर्स प्रोडक्ट के लिए MRP से भी लगभग 36% ज्यादा दाम देने के लिए तैयार है। तो UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में 40% से ज्यादा खाद्य पदार्थ रिटेल और कंज्यूमर लेवल पर वेस्ट हो रहे हैं, और कांग्रेशनल रिसर्च रिजर्व्स के अनुसार फ्रॉड और मिलावट के कारण ग्लोबल फूड इंडस्ट्री को सालाना लगभग $15 बिलियन का नुकसान भी हो रहा है। एक और रिपोर्ट जो कि क्वेस्ट रिसोर्स के नाम से मशहूर है, क्वेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार हर साल ग्रोसरी स्टोर की शेल्फ में रखा हुआ 10% फूड भी ज्यादा वेस्ट हो जाता है या फिर एक्सपायर हो जाता है। एक तरफ जहां इतने फूड वेस्ट हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग रोजाना 25,000 लोग भूख के कारण रोज मरते हैं, और सैडली हर साल 3 लाख बच्चे भी भूख के कारण अपना दम तोड़ देते हैं। शॉकिंग, आई नो, बट इट्स सैड फैक्ट ऑफ लाइफ। तो ग्रोसरी चेंज की इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो हमने आपके सामने रखी भी है, लेकिन उनका एक ही रामबाण इलाज है और वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसलिए तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रोसरी चेन्स यानी कि वॉलमार्ट ने भी अपने सप्लाई चेन में
ग्रोसरी की मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए IBM फूड ट्रस्ट के ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का यूज करना भी शुरू कर दिया है। तो आइए समझते हैं कि ब्लॉकचेन द्वारा सप्लाई चेन में ग्रोसरी की मूवमेंट्स को ट्रैक कैसी होती है और उसके फायदे क्या क्या हैं। लेकिन इसके लिए हमें पहले फूड की जर्नी समझना जरूरी है। जी हाँ, फूड की जर्नी। हम रोज दाल, चावल, गेहूं, दूध इत्यादि खाते हैं। वो हमारे पास कहां से आता है, इसके बारे में कभी सोचा है आपने? एक फार्मर दूर गांव में दाल, गेहूं, जीरा, हल्दी इत्यादि उगाता है, जो कि वो नजदीकी यार्ड में बेचता है। वहां से वो स्टोरेज फैसिलिटी में जाता है, जहां से और मिडिल मैन ऐड होते हैं। फिर वहां से होलसेलर्स और फिर नजदीकी किराना स्टोर्स यानी द मॉल के पास में वो पहुंच जाता है। और हर लेवल पर फूड की प्राइस बदलती रहती है। इतना ही नहीं, हर लेवल पर फूड प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी और मिलावट का भी खतरा बना रहता है। लेकिन ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से इसमें काफी बदलाव आ सकता है। ब्लॉकचेन की मदद से फार्मर से लेकर एंड यूजर तक फूड की जर्नी को टाइम स्टैम्प के साथ में ट्रैक किया जा सकता है, जिससे ग्रोसरी की एक्सपायरी और मिलावट को भी रोका जा सकता है। गार्टनर की एक रिपोर्ट के अनुसार 20% ऑफ द टॉप ग्लोबल ग्रोसर्स आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, जिससे फार्मर्स को लेकर एंड यूजर्स तक सबका फायदा होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फूड प्रोडक्ट्स की पारदर्शिता और फूड एक्सपायरी डेट्स की विजिबिलिटी में सुधार करने में भी मदद कर सकता है। परंपरागत तरीकों से ग्रोसरी की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार भी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी ग्रोसरी चेन में और क्या क्रांतिकारी और सकारात्मक बदलाव करती है। तो मैं मनोज द्वारा आपसे विदा लेता हूं। आज के लिए बस इतना ही। Web3 से जुड़ी हुई हर एक खबर को पाने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल 3.OTV। थैंक यू। Bitcoin, the most popular cryptocurrency or virtual digital asset, has once again surpassed the payment processing behemoth Visa in terms of market valuation, thanks to a near 50% increase in its value since the beginning of 2023. The price of Bitcoin is hovering around $24,000 at the moment. Its market size of $480.27 billion is now more than that of Visa, which has a market cap of $469.87 billion. The first occasion was in late December 2020, coincidentally coinciding with the first time that BTC reached $25,000 in value. This was accomplished during a price rise that saw BTC climb from $10,200 in September 2020 to $63,170 till April 2021. The price increase lasted for 7 months. BTC was able to take the lead over Visa for a very short period of time before the payments business was able to reclaim their position as the market leader. Market capitalization of MasterCard, the world's second largest payment processing network, is now $345.24 billion. BTC has a significant lead over MasterCard. The failure of the cryptocurrency exchange FTX took off more than $100 billion from the value of BTC in only 4 days. Bitcoin is still trading at a discount of 63.7% compared to its all-time high of $69,044 that it hit on November 10, 2021. Meanwhile, digital assets have witnessed outflow of $32 million last week, the largest since December 2022, but rising prices pushed its assets under management to its highest level since August 2022. Bitcoin bore the brunt of its negative sentiment, seeing nearly $25 million of outflow, while short Bitcoin investment products saw inflows of $3.7 million. Despite continuing outflows, the value of assets under management rose due to higher prices over the period. Bitcoin continues to dominate this space.
Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. Two banks failed in less than a week. One was crypto-friendly and the other was the biggest bank for tech startups. However, cryptocurrency prices rallied Sunday night after the US Federal Reserve stepped in to provide a backstop for depositors of both banks. The event sparked instability in hitherto stablecoin market, a close cousin of legal currency and a rival of virtual currency. We are talking about Silvergate Bank and Silicon Valley Bank. Last Wednesday, Silvergate Capital, a central lender to the crypto industry, made public that it would be winding down operations and liquidates its banking arm, the Silvergate Bank. On Friday, Silicon Valley Bank, a major lender to startups, collapsed after depositors pulled out over $42 billion. Its Wednesday statement of fund requirement to the tune of $2.25 billion to shore up its balance sheet triggered withdrawal. Signature, with a strong crypto focus, bigger than Silvergate, was seized on Sunday evening by banking regulators. It seemed the contagion is spreading thick and fast. Meanwhile, the federal government stepped in on Sunday to guarantee all deposits of SVB and Signature depositors, adding confidence and sparking a rally in the crypto markets. Though the announcement sent bitcoins and other private currencies rolling higher, but the measure influenced stablecoins negatively. Confidence in the sector took a hit as USDC, the second most liquid US dollar-pegged stablecoin, lost its peg, dropping below 87 cents at one point on Saturday after its issuer Circle admitted to having $3.3 billion banked with SVB. DAI, another popular dollar-pegged virtual currency that is partially backed by USDC, traded as low as 90 cents on Saturday. Both Coinbase and Binance temporarily paused USDC to dollar conversions. And on Saturday, some traders began swapping their USDC and DAI for Tether, the world's biggest stablecoin with a market value of more than $72 billion. Tether's issuing company did not have any exposure to SVB and it's currently trading above its $1 peg as traders flock to safer pastures. The stablecoin market began to rebound as of Sunday evening after Circle released a blog post saying that it would cover any shortfall using corporate resources. Both USDC and DAI have since shifted back toward their dollar peg. Meanwhile, stablecoin issuer and crypto brokerage firm Paxos said it currently holds $250 million at Signature Bank. The company added that it holds insurance for private deposits in excess of the balance Paxos currently has at Signature Bank. Additionally, the US's leading cryptocurrency exchange Coinbase said that it held a corporate cash balance of around $240 million with Signature Bank as of Friday. The exchange said that it also expects to be fully able to recover the funds. The Celsius Official Committee of Unsecured Creditors, a body that represents the interests of account holders at the bankrupt crypto lender Celsius, added that Signature Bank held some of its funds but did not disclose the amount. That's all in this segment. This is me, Vishakha Thakur, signing off, and for more such updates, keep watching 3.0 TV. Do like, share and subscribe to our channel. Hello and welcome to 3.0 TV. I'm your host Ruchi Sharma. And by the looks of this segment, you must have understood that today's special segment is about emojis. No, I'm not talking about 2017 animated film The Emoji Movie.
Today we are going to talk about financial emojis, because a United States federal judge has ruled that using certain emojis while tweeting specifically signals to users that they should expect a financial return on their investments. Victor Marrero, a United States District Court judge for the Southern District of New York, ruled that tweets containing emojis like the rocket, the chart with upward trend, and money bag mean a financial return on investment. The full court ruling document details the arguments made by NBA Top Shot Moments owner and developer Dapper Labs against allegations that tweets promoting its NFT platform violated US securities law and that its NFTs are securities. But while Dapper Labs contends that the promotional tweets merely provide accurate facts regarding recent sales and do not reference any gains or losses, the judge saw the matter differently. Reaction from the crypto world has been incredulous. Former SEC branch chief Lisa Braganza tweeted about the ruling, confirming that there would be a legal consequence to those who ignore it. Within the filing, the judge pointed out that some tweets published by the NBA Top Shot accounts on Twitter contains emojis indicating financial returns. And although the literal word profit is not included in any of the tweets, the rocket ship emoji, stock chart emoji, and money bags emoji objectively mean one thing: a financial return on investment. Members of the crypto community reacted to the warning and tweeted various responses. One Twitter user described the news as tragic, while another pointed out that freedom of speech no longer extends to emojis. So from now on, if you see these financial emojis, please be aware that they are not using to lure you in one of the false promise of financial rewards. And also be careful not to use such emojis in tandem with each other. Well, that's all in this special story. This is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV and have a great day. From Post Malone to Sonam Kapoor's character in Sanju to Kareena Kapoor's character in Three Idiots, everyone adores sunflowers. Yes, the sunflower season is just around the corner and we all love sunflowers. They bring joy in our lives. Well, they are also gaining popularity in the GameFi space. I am sure you must have guessed it by now. I am talking about Sunflower Land. What's up guys, hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Shikha Singh. Sunflower Land is a blockchain farming game which is similar to Good Game Big Farm, Hay Day, Farm Together. I guess you must have played these games. Players work their land, extract its resources and trade them on the open market. It's a community working together to build something in cooperation. The game makes use of the Polygon network, a layer 2 of the Ethereum blockchain. The game has been developed by Thought Farm Proprietary Limited, a company based in Sydney, Australia. Sunflower Land attempts to recreate the conditions of real-life market economics. So the game's developers have a heavy focus on the supply and demand of the in-game resources. Scarcity is built in and hard work is rewarded. Each player starts the game with a plot of land which they can build up from the bottom. They can also put their own money into the game to progress quickly and get ahead of all players. To connect to Sunflower Land, you'll need a Polygon-enabled crypto wallet such as MetaMask. Switch to Polygon, connect to Sunflower Land, and you'll be asked to sign a few requests. You'll also need to pay a small amount of Matic for gas fees. Then you need to donate a minimum of 1 Matic to play the game. This money goes to charity that you will choose from a list of options. Confirm your transactions, wait a few moments, and you will be given a farm so you can start your journey inside the Sunflower Land. Sunflower Land is indeed a blockchain game that employs NFT. The farm is the most important.
This is a player's plot of land in the Sunflower Land virtual world. You guys, it's worth noting that farms are free to mint, but they can't be sold on the market. There are many listed Sunflower Land farms with big red crosses through them on the secondary marketplace OpenSea. These are from the people who attempted to sell their farms by listing them on the market. Unfortunately for them, the game's smart contract deletes the farm automatically. This is something to keep in mind, or else you will be KO'd if you try to sell it. SFL is the Sunflower Land token. It's the glue that holds together the Sunflower Land economy. It serves as both the in-game currency and the token users earn while playing the game. GameFi is a rapidly expanding sector of the Web3 industry, particularly popular in Southeast Asia. Partnerships abound in the GameFi sector, as illustrated by Katana Inu's collaboration with Boba Networks and Metagame's collaboration with Mr. Labs. Decentralized gaming platform Katana Inu partnered with Boba Network to leverage the strengths of both companies to develop better gaming experiences that combine play-to-earn mechanics, multi-chain support, and NFTs. The combined effort between Katana Inu and Boba Network will provide players with fast, efficient transactions and exciting new NFTs. Similarly, Misten Labs, a Web3 infrastructure company and the original developer of the Sui Layer 1 blockchain, announced a collaboration with Metagame Industries, an interconnected Web3 gaming ecosystem. Metagame Industries will use Sui to develop Abyss World, a Web3-based action role-playing video game. Abyss World, backed by AMD, Microsoft, and IGN, is said to be the first AAA-level action role-playing open-world game in Web3. Abyss World combines Metagame Industries' expertise in creating exciting and interactive games with Sui's high-performance, secure, and gaming-focused technology to create a one-of-a-kind gaming experiences that bridges and unites Web2 and Web3 users. The collaboration will help both companies take over the gaming world and usher in a new era of blockchain-based gaming. That's it in today's special segment. We will meet again. Until then, keep watching 3.0 TV and do not forget to press the bell icon for more such updates. Duocon, the disgraced tycoon behind the collapse of Terra Luna USD and Luna coins that roiled the crypto market back in May 2022, is making headlines once again. A charge sheet has been framed against Duocon and his company by the Securities Market Regulator for running a Ponzi scheme. The Securities and Exchange Commission released a 55-page document detailing various charges of fraud against Duocon and Terraform Labs, the so-called company Con founded to develop the Terra blockchain. In a latest development regarding the Terra Luna collapse, the SEC has found and claims that Con and others were engaged in a scheme to deceive and mislead investors in the US and abroad. The SEC believes that despite being on the run and hiding in some Siberian spider hole, Duocon may yet be living in a very high and luxurious life. Terra Luna and Terra Classic prices witnessed a sudden fall after the Securities and Exchange Commission on Friday filed a lawsuit against Duocon, Terraform Labs, and its affiliates. It indicates that Duocon still has influence over Terra Luna and Terra Classic. Terra founder Duocon has earlier claimed that the Terra Classic community and developers are separate from Terra. According to some sources and reports that suggest, with the Securities and Exchange Commission's lawsuit against Duocon, which has claimed that Jump Crypto made a profit of $1.28 billion in trade during the Terra Luna collapse. Well, someone's loss is someone's gain. We are talking about rival stablecoins that benefited from the Terra Classics, which is SEC charges. Market leader Tether, USDT, has been a big beneficiary, adding $1.9 billion to its market capitalization, which is now stands at $70.3 billion, commanding a 52.6% of the stablecoins market. We are talking about the overall market share versus 51% earlier.
Circle's USD coin, the second biggest stablecoin player, has a similar bull run, adding $700 million to its market cap, which now stands at $42 billion, commanding 31.3% of the overall stablecoin market share. And that's all there is in today's special segment. We will meet again with such interesting updates. Till then, keep watching 3.0 TV. I am your host, Manoj Zara, signing off. Cryptocurrencies markets have stabilized over the past 24 hours after grappling with the uncertainties over the global banking sector as fears of bank run from the US to Europe pushed investors to safe assets. Bitcoin traded above the crucial $26,000 mark. Futures tied to the Dow Jones Industrial Average fell Friday as investors contemplated the future of First Republic and other banks. Dow futures dipped 144 points, or 0.4%. S&P 500 futures inched 0.3% lower, while Nasdaq 100 futures were flat. Benefiting from the recent surge in Bitcoin are the Bitcoin mining stocks that have gained huge traction amid the global bank crisis. Investors rushed to find refuge in cryptocurrencies in wake of rising bond yields. The global crypto market cap is $1.14 trillion, a 5.96% increase over the last day. Bitcoin's dominance is currently 45.26%, an increase of 0.87% over the day. BTC was trading at $26,740, up 7.75% in the past 24 hours. ETH was trading $1,748, up 5.30%. All the other major altcoins traded higher. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. Global value of central bank digital currencies will grow dramatically from $100 million today to $213 billion by 2030 once the virtual money gains greater adoption for domestic payments, according to new data from Juniper Research. By 2030, 92% of total value transacted through CBDCs around the world will be paid domestically as cross-border payment systems face an uphill battle for adoption, Juniper predicted. The digital currency, which is backed by traditional fiat cash such as the US dollar or British pound, can bolster financial inclusion because customers don't have to have a bank account to hold them. They can instead use encrypted digital wallets that exist in the cloud, on a desktop or laptop, or even on the USB storage device. With the cross-border CBDC payment system, immigrants, for example, could send money back to their countries of origin without having to pay what can be exorbitant fees for electronic money transfers. Businesses would also be able to make cross-border payments for goods and services with much cheaper and faster settlements. Central bank-backed digital currencies would also reduce costs of printing and replacing money, help improve fraud detection, and allow money paid to scammers to be more easily traced and recovered, according to Lars Steenberg, former Ameritrade CTO and managing partner at cybersecurity research firm CTM Insights. Unlike cryptocurrencies such as Bitcoin, a currency that is backed by the full faith and credit of United States or other trusted government, would provide certainty that the value of currency is being carefully managed.
A government can adjust everything from the money supply to interest rates as they manage and maintain the value of a fiat currency. The US has been a slow follower compared to other nations such as China and its digital yuan in developing a CBDC. Australia, China, Thailand, Brazil, India, South Korea, and Russia already have pilots or will begin test programs this year. By 2030, the Bank of England and UK Treasury are planning to launch a digital pound or Britcoin CBDC. It matters which nation's digital currency achieves widespread adoption first because that government will be able to set the global rules for most others. Altogether, 114 countries representing 95% of global GDP are investigating the creation of CBDCs according to the Atlantic Council, a Washington-based think tank. Only 10% have launched general CBDC networks. 16% of projects are in pilot stage, 30% are in development, and 27% are still in the research stage, according to the Atlantic Council. CBDCs will also require a complex regulatory framework, including privacy, consumer protection, and anti-money laundering standards, which need to be made more robust before adopting the technology, according to the Council. The research by Juniper said to date, there is still lack of commercial product development around CBDCs, with few well-defined platforms for central banks to leverage, a big limiting factor for the current market. That's all in this segment. This is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such updates, keep watching 3.0 TV. Do like, share and subscribe to our channel. So finally, some good news for the supporters of technology companies, especially the ones who cater to the Web3 ecosystem. BlackRock, world's largest asset manager, has launched a new metaverse-focused ETF, which is the exchange-traded fund. Recent spat of the cutbacks in technology budget, particularly spending on technology that was looking to harness the virtual world from the likes of Meta, Microsoft, Apple, etc., resulted in investors becoming increasingly suspicious about the prospect of the new age technology. With BlackRock stepping up on the gas, joining the likes of Roundhill Investments, ProShares, and other ETF issuers to compete in the increasingly crowded space could help calm investors' nerves. The iShares Futures Metaverse Tech and Communications ETF offers the investment community exposure to companies providing both the hardware and software used within the metaverse. The metaverse allows consumers to immerse themselves in a virtual world that's interconnected through digital platforms, social media gaming, 3D software, and both augmented and the virtual reality. IVRS trades on the New York Stock Exchange and comes attached with an expense ratio of 0.47%. which is cheaper than most of its competitors' funds. That's what the research analysts have highlighted. The 4 funds that IVRS will be fighting alongside, which will include the Roundhill Ball Metaverse ETF, ProShares Metaverse ETF, Subversive Metaverse ETF Punk, and the Fidelity Metaverse ETF, which is also called as FMET. FMET is the only fund of the 4 with a lower expense ratio, as its cost sits at 0.39%. From a holdings perspective, 22.66% of the IVRS is made up of its just 4 stocks. The top 4 holdings of IVRS includes Meta Platforms at 6.91%, Apple at 5.73%, Nvidia at 5.53%, and Roblox, which holds a 5.21% weightage.
We will keep you connected to the evolving world of NFTs. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. Metaverse is grabbing the attention of telecom giants as the technology has potential to disrupt the industry. Picking the signals from industry congregation last year on the sidelines of Mobile World Congress held at Barcelona in Spain, the participants are excited about the opportunities present in the virtual world. The attendees were subjected to their first-hand experience of the metaverse thanks to SK Telecom's display wearing virtual reality headsets, or they could even travel virtually to Paris to see various tourist destinations. Cut to Mobile World Congress 2023, which will be held from 27 February to 2nd March, users will once again take a virtual ride into Metaverse. This time around, Indian telecom giant Vodafone Idea is all set to provide users the experience of flying a real drone from the Metaverse. Flying a drone will probably not be an issue, but considering the situation where flying a real drone into a metaverse can have certain cost implications. Vodafone Idea is already burdened by a mountain of debts. The telecom operator recently reported a widening of its consolidated loss to Rs 7,990 crore for the third quarter. The total gross debt as of December 31st, 2022 stood at Rs 2.22 lakh crore, comprising deferred spectrum payment obligations of Rs 1.39 lakh crore, and the debt from banks and financial institutions stood at Rs 13,190 crore. It appears Vodafone is evaluating opportunities on the metaverse to enhance customer experience and is keenly following this emerging technology. To attract more customers, Vodafone is inviting visitors to its stand at MWC 2023 to enter Vodafone's metaverse and fly a real-life 5G connected drone located in Sewell, 830 kilometers away, using a Meta Quest Pro virtual reality headset. The Metaverse drone is one of a series of new network application programmable interfaces being developed by Vodafone. Network APIs are a set of rules based on industry-wide open standards that allow developers to plug into and use the low-latency benefits, speed and scale of Vodafone's pan-European 5G network, which covers nearly 350 towns and cities through a simple and secure user interface. Built by Vodafone's developers, the Metaverse API could be used by emergency services to control drones out of sight and to deliver vital medical supplies in a congested area. Further, it will enable farmers to inspect vast perimeter fences and energy companies to check remote power lines. Vodafone's 5G network will deliver a range of metaverse services to its consumer and business customers, such as AR or XR services for gaming and entertainment, navigation, remote assistance and maintenance, and immersive shopping. The technology will help create sustainable future and accelerate digital business products, and service is the central theme for Vodafone at MWC. Its stand is arranged into 5 zones: Greener Together, Greener Foundations, Greener Today and Tomorrow, and Core. Well, Vodafone's 5G network is a powerful tool that can support, enhance and enable business and consumer innovations. At the forefront of this innovation is the world's first prototype 5G network built on a Raspberry Pi, showcasing at MWC, which could give customers their very own low-cost, private and fast mobile broadband network. Well, that's all in the story. This is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such updates,
Keep watching 3.0 TV. Do like, share and subscribe to our channel. And for instant updates, do press the bell icon. ये गाना है तो फिल्मी, लेकिन ये एक चेतावनी के तौर पर बजाया जा रहा है। कहानी इंटरेस्टिंग है, इसलिए जरा गौर से सुनिए। बंटी और बबली, घोसला का घोसला, धूम 1, धूम 2, धूम 3, बदमाश कंपनी, द स्टिंग, द इटालियन जॉब। इन सब मूवीज में एक बात कॉमन है, ये मूवीज चोर अर्थात कॉन आर्टिस्ट के बारे में है। और आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसे ही क्रिप्टो कॉन आर्टिस्ट के बारे में है। तो हुआ यूं कि यूरोप में कुछ कॉन आर्टिस्ट ने ऐसा गदर मचाया जिसके चलते विक्टिम्स के लाखों डॉलर्स उड़ गए। ये चोर रात के अंधेरे में नहीं आते, नो सर। ये कॉन आर्टिस्ट दिन दहाड़े सूट पैंट और टाई पहनकर आपसे 5 स्टार होटल की लॉबी में या फिर किसी पॉश रेस्टोरेंट में मिलते हैं और पलक झपकते ही आपका पैसा चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर होटल या रेस्टोरेंट से कैसे जा सकता है? तो फिर ये कौन होता कैसे है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे कॉन आर्टिस्ट की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक चोरों की टोली वेब3 वर्ल्ड के ऐसे इन्वेस्टर्स को टारगेट करती है जो किसी स्टार्टअप में पैसा लगाकर मल्टीफोल्ड रिटर्न कमाना चाहते हैं। उनके लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, एक ऐसा समा बनाया जाता है जिससे कि इन्वेस्टर को लगे कि अगर उसने कॉन आर्टिस्ट की स्कीम में इन्वेस्ट नहीं किया तो उसके हाथ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। फिर इन्वेस्टर्स से डिजिटल वॉलेट में प्रूफ ऑफ फंड की मांग की जाती है, जैसा कि वेब3 मेटावर्स गेमिंग इंजन वेबावर्स के को-फाउंडर अहाद शम्स के साथ रोम के एक होटल लॉबी में हुआ। इन कॉन आर्टिस्ट ने शम्स को $4 मिलियन क्रिप्टो में एक ट्रस्ट वॉलेट में शिफ्ट करने को कहा। वो वॉलेट शम्स ने खुद सेट किया था, इसीलिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर भी जब वो मीटिंग से उठकर घर आए तब तक उनके खुद के वॉलेट से $4 मिलियन गायब हो चुके थे। ऐसा ही अनुभव यूके बेस्ड क्रिप्टो फोकस पब्लिशिंग और डेटा सर्विसेज कंपनी कॉइन पब्लिशर के को-फाउंडर मिस्टर हंटर के साथ हुआ। वो अपने स्टार्टअप के लिए $2.2 मिलियन रेज करना चाहते थे। कॉन आर्टिस्ट ने उससे कहा कि वो एक वेल्थ मैनेजर है और एक रिच पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। वो हंटर को $2.2 मिलियन दिला देगा, बदले में उन्हें 10% कमीशन यानी कि ओवर $200,000 बिटकॉइन में देने होंगे। डील की लालच में उन्होंने $206,000 के बिटकॉइन को अपने एक्सोडस वॉलेट में ट्रांसफर किया। लेकिन फेस टू फेस मीटिंग के बाद जब वो घर आए तब उनके वॉलेट से पैसे उड़ चुके थे। हंटर और शम्स की तरह दुनिया के अलग अलग कोने में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिसमें सिमिलरली इन कॉन आर्टिस्ट ने लोगों को लाखों करोड़ों का चूना लगा दिया है। लेकिन कई लोग शर्म की वजह से खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, इसीलिए एग्जैक्ट अमाउंट का पता लगा पाना मुश्किल है। अब जब लुट ही गए हैं तो बताने में कैसी शर्म। खैर जो भी हो, आज तक विक्टिम्स और जांच एजेंसीज भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये लोग दूसरों के वॉलेट से पैसे कैसे ड्रेन कर रहे हैं। कोई कहता है कि वो जहां मिलते हैं शायद वहां सीक्रेट कैमरा था जिसके थ्रू उन्होंने वॉलेट का सीड फेज यानी कि पासवर्ड क्लिक कर लिया था। तो कोई कहता है कि एक कॉन आर्टिस्ट हिप्नोटिस्ट या मेंटलिस्ट हैं जो लोगों को सम्मोहित करते हैं, उनसे वॉलेट का सीड फेज उगलवा लेते हैं या उनका माइंड रीड कर लेते हैं। ऐसे चोर 2018 से दुनिया के अलग अलग देशों में एक्टिव हैं और अभी तक हाथ नहीं आए हैं। अपनी लेजिटिमेसी प्रूफ करने के लिए ये चोर लिंक्डइन जैसी वेबसाइट पर अपने प्रोफाइल बनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड लिंक्डइन ने अपनी वेबसाइट से 32 मिलियन फेक अकाउंट्स डिलीट कर दिए थे। ऐसे स्कैमर्स से बचने के लिए कभी भी अपने डिजिटल वॉलेट को लेकर अननोन लोगों से मिलने ना जाएं। अपने वॉलेट की सीड फेस को अपने लव्ड एंड ट्रस्ट वंस के अलावा किसी से भी शेयर न करें। हम उम्मीद करते हैं कि जो हाल शम्स और हंटर का हुआ वो किसी का ना हो। इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।
Hello and welcome to 3.2 TV. I am Vishakha Thakur. The metaverse is one of the most important emerging technologies right now, and AI can guide it to success. Google, Microsoft, and Meta, three of the most powerful tech companies, have agreed on an overarching vision. AI is the future, and it's time to move more effort and resources to machine learning programs. In addition, according to Finance Minister Nirmala Sitharaman's 2023 budget presentation, the Indian government intends to establish 3 centers of excellence for artificial intelligence in prestigious educational institutions. The goal is to create a robust AI ecosystem in India, as well as to develop talented AI experts. But 2023 is not all good news for the Web3 ecosystem, as over 270 tech businesses have reportedly laid off more than 86,000 workers, including roughly 12,000 at Alphabet, 10,000 at Microsoft, and 8,000 at Amazon. Meta laid off 11,000 employees in November. Tech titans have begun to divert their attention to artificial intelligence. The goal is to perhaps better position themselves in the market. Sundar Pichai, CEO of Google and parent Alphabet, wrote in a January blog post that the company has a substantial opportunity in AI and is adjusting priorities to fully capture it, building on the company's early investments in AI. Satya Nadella, CEO of Microsoft, also shared thoughts about AI advancement in the company's layoffs announcement, writing that the technology is driving the next major wave of computing as Microsoft uses AI models to build a new computing platform. Mark Zuckerberg did the same in Meta's November announcement, sharing that the company would prioritize funding and resources toward high-priority growth areas like its AI discovery engine. Meta, Google, and Amazon all unveiled generative AI tools for film or animation last year. In addition, Microsoft recently announced an expanded cooperation with OpenAI, the inventor of text-based generative AI tools such as GPT-3 and ChatGPT. Microsoft is also working into introducing OpenAI's text tools into Office products like Word, Outlook, and PowerPoint. As companies push into the AI sphere, employment postings in the field have remained more resilient than in the overall tech world. So let's look at some data to back up our claim. According to ZipRecruiter statistics provided with TechBrew, IT job vacancies increased by slightly over 2% in January compared to February 2020. In comparison, AI job postings increased by 6.3%. So, with all this happening in the tech world, let's take a look at how AI is making way for the metaverse in order to make it reach its potential. AI uses facial recognition software and other technologies to make accurate and realistic avatars for users by processing users' mannerism, facial expressions, and non-verbal cues to create a more accurate user experience. In addition to making realistic avatars for metaverse users, AI helps generate realistic digital humans, often referred to as non-player characters in video games. NPCs interact with users in the metaverse as if they were real people. AI makes way for the metaverse to be better able to process language, with AI technology recognizing the natural language and converting it into a machine language format before processing results back into the natural language. Users all over the globe can interact with metaverse. Not only this, there are several ways that AI can help to deliver the business applications of metaverse. AI-powered operations is a branch of AI that employs machine learning to assist businesses in managing their IT infrastructure, and it can be used to anticipate and prevent outages,
detect problems in real time, and optimize resources. Well, AI-powered chatbots are gaining popularity among businesses. In the metaverse, AI bots can be used for a variety of tasks such as customer service, marketing, and sales. It can assist users in the metaverse by providing instructions, product and service information, answering customer questions, taking orders, and even performing transactions on their behalf. So, Metaverse AI will be a distant evolution of Web3. In its most complete form, it will be a series of decentralized, interconnected virtual worlds with a fully functioning economy where people can do just about anything they can do in the physical world. That's all in the story. This is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such updates, keep watching 3.0 TV. Do like, share, and subscribe to our channel. Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Shubham Joshi. Bitcoin and other cryptocurrencies performed exceedingly well in 2023. They aren't the only ones who have done well. In fact, Bitcoin offshoots have fared far better. We are discussing Bitcoin mining. Have you ever heard of Bitcoin mining? Well, let's understand. Bitcoin mining is a process of creating new Bitcoins by solving complicated math problems that verify transactions in the currency. It is an energy-intensive process in which miners use hundreds of thousands of powerful specialized computers to secure the Bitcoin blockchain. In simple terms, it is basically facilitating between buyers and sellers on the Bitcoin blockchain in the most cost-efficient manner. But why are we discussing this? Well, it has recently been discovered that mining stocks are on the rise, and just not that. Bitcoin mining stocks have performed, and how? Some of them have outperformed the primary cryptocurrency Bitcoin itself. Analysts were quick to spot the trend. On March 1st, Bitcoin mining analyst Jaran Mellerud posted an update on Bitcoin mining stock performance. His findings revealed that 20% of Bitcoin mining stocks were ahead of the asset's gain in February. All but one have outperformed the Nasdaq he mentioned. Among these Bitcoin mining stocks, Iris Energy was the top performing mining stock in February with a gain of 29%. The research further discovered that most of the gains came mid-month when the Australian firm announced the purchase of 4.4 exahashes worth of mining rigs from Bitmain. Cipher Mining was a close second in February with a gain of 27%. The Texas Miner Company saw huge gains at the start of the month following positive expansion updates in January. Spear 3D Corp, Cathedra Bitcoin Incorporation, and Stronghold Digital Mining Incorporation also outperformed Bitcoin in February with a gain of 7 to 11%. It has also been observed that Bitcoin network's hash rate is near its peak levels, which is observed to be good for security, but not so much for miners competing for the next block. Well, you must be wondering, first I said mining stocks and now hash rate. What is this hash rate? Well, hash rate refers to the computing power being used by a network, for example, the Bitcoin network, to process transactions. Determining hash rate can help investors gauge the health and security of a cryptocurrency's network. According to data from BitInfo charts, the average network hash rate is currently at 327 exahashes per second. However, peaked in late February as new machines found their way online to secure this network. Coming back to stocks' performance, if they manage to keep up the good work, it is possible that going forward it would translate some of the gains in Bitcoin as well. Well, that's all there is in today's special segment. Keep watching 3.0 TV for more such interesting updates. Have a great day.
Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma. Cryptocurrencies markets have stabilized over the past 24 hours after grappling with the uncertainties over the global banking sector as fears of bank run from the US to Europe pushed investors to safe assets. Bitcoin traded above the crucial $26,000 mark. IC15 index of cryptocurrencies was trading up by 6% at 36,380 points. In an interesting news, the world's largest decentralized exchange Uniswap has officially launched its services on the EVM-compatible smart contract blockchain BNB chain. This move would highly impact the BNB chain's trading traffic, analysts said. Benefiting from the recent surge in Bitcoin are the Bitcoin mining stocks that have gained huge traction amid the global bank crisis. Investors rushed to find refuge in cryptocurrencies in wake of rising bond yields. Meanwhile, the European Central Bank continued its own monetary tightening amid rising inflation on the continent, increasing its interest rate by 50 basis points on Thursday. Analysts saw the move as a precursor of the Fed raising interest rates by 25 basis points. As per the data from CoinGlass, more than 36,000 traders liquidated over the past 24 hours. However, the total liquidations came in at $112.5 million. Interestingly, Binance, one of the largest crypto exchange, indicated the largest amount of liquidation of $39 million in the past 24 hours. The global cryptocurrency market cap was trading higher around $1.12 trillion, rising 4.7% in the last 24 hours. However, the total crypto market volume decreased by 68% to stand at $68 billion. In the light of recent collapse of US banks, the US Federal Reserve has taken a step to start printing money, adding about $300 billion to the market in a move to rescue the cash-strapped banks. However, the markets have stabilized now to a certain extent, with global central banks from the Fed Reserve, the US and Swiss National Bank coming to the bank rescue as well. Investors are looking ahead to the Federal Reserve's meeting, which is scheduled next week, to analyze the pace at which the central bank will proceed in its fight against inflation in light of the shake-up in the banking sector. US stock futures were trading mixed after a relief rally earlier in the overall markets. Dow Jones Industrial Average fell by 46 points or 0.14%. S&P 500 futures inched up 0.02%, while Nasdaq futures rose 0.2%. Bitcoin was trading at $26,695, up 7%. Bitcoin, the largest cryptocurrency by market cap, is on a recovery stage amid the growing global bank crisis. After dropping below the crucial price level of $20,000 on March 10th, Bitcoin price surged and surpassed the vital $26,000 price level on March 14th. However, since then, BTC is hovering around the $25,000 to $26,000 mark. Ethereum, the second largest crypto, was up by 4.8%, trading at $1,745. BNB was up by 5.2% to trade at $334. Solana SOL was up 4.3% and was trading at $20.5. Cardano's ADA token was up by 4% to trade at $0.34. Avalanche AVAX was trading at $16.8, higher 6.2%. Polygon Matic was trading up by 5.8% to trade at $1.2. Doge, the popular meme coin, was trading up by 6.3% at $0.075. Shiba Inu was trading up by 4.3%. Ripple's XRP token traded at $0.37, up by 3%. Polkadot was up by 6.8% to trade at $6.5. That's all in Coin Monitor for now. This is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV and have a great day. Ripple, a global leader in enterprise blockchain and crypto solutions, announced today a strategic investment in Blockchain Founders Fund, a Singapore-based early-stage venture capital fund that focuses on top-tier Web3 startups worldwide. Ripple's investment is part of the company's effort to accelerate the global adoption of blockchain technology. BFF will use the funds to help high-potential, early-stage companies build the infrastructure and products that will ease the transition to a decentralized future. The Blockchain Founders Fund is supported by industry leaders, investors, and family offices, as well as leading financial institutions.
BFF has proven to be an industry-leading venture capital fund with the means and expertise to scale startups with over 100 portfolio companies primarily focused on the Web3 landscape. Mr. Labs, a Web3 infrastructure provider and creator of the Sui Layer 1 blockchain, has announced a partnership with game developer BlueJay Games. BlueJay Games will release its Web3 arcade game, Arcade Champion, for mobile devices on the Sui blockchain as a result of this collaboration. BlueJay Games, based in Texas, is a well-known video game development studio. Sui, on the other hand, can support a wide range of apps development at high speed and low cost due to its horizontal scalability. It was designed from the ground up to provide creators and developers with the tools they need to create experiences for the billions of people who will use the web's third generation. Arbitrum, the dominant player in Ethereum's Layer 2 scaling landscape, has received a token. According to the Arbitrum Foundation, ARB, Arbitrum's new token will be airdropped to community members on Thursday, March 23rd. According to the Arbitrum Foundation, ARB will mark Arbitrum's official transition into a decentralized autonomous organization, which means that ARB holders will be able to vote on key decisions governing Arbitrum One and Arbitrum Nova networks that allow users to transact on the Ethereum blockchain at faster and lower fees. Arbitrum DAO will have the power to control key decisions at the core protocol level, from how the chain's technology is upgraded to how the revenue from the chain can be used to support the ecosystem, the Arbitrum Foundation said in a statement. In the upcoming special segment on crypto crimes, we will update you about the following news. $300,000 stolen by fake Blur airdrop websites. FBI says crypto investment fraud rose 183% to $2.57 billion in 2022. Euler Finance attacker launders $1.8 million via crypto mixer Tornado Cash. Stay tuned for more updates. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions.
Hello and a very warm welcome. I am Manoj Dara. So, in the latest development, Nishad Singh, the Indian origin software engineer, is the latest member of the defunct FTX's inner circle, has pleaded guilty to a fraud. Singh, the former director of FTX, was an honor student, has agreed to cooperate with the prosecutor's investigations into FTX founder Sam Bankman-Fried. I am unbelievably sorry for my role in all of this, Singh said, adding that he knew by mid-2022 that the Bankman-Fried's hedge fund Alameda Research was borrowing FTX customer funds and customers were not aware of. Singh would forfeit proceeds from the scheme. Sam Bankman-Fried, FTX's founder, pleaded not guilty to 8 criminal charges filed against him in December. Prosecutors say SBF stole billions in FTX customer funds to plug losses at Alameda. SBF acknowledged inadequate risk management but says he did not steal funds. Bankman-Fried, which is 30, now faces 12 criminal charges after prosecutors unsealed a new indictment against him last week. Singh is the third Bankman-Fried close associate to plead guilty and cooperate with the probe. Alameda's chief executive Caroline Ellison and FTX's chief technology officer Gary Wang has already pleaded guilty in December to 7 and 4 criminal charges respectively. Singh can face a jail term of maximum 75 years in exchange of cooperating with the federal prosecutors. Singh has also sought a release against personal bond of $250,000, and separately on Tuesday, the US Securities and Exchange Commission and Commodities Futures Trading Commission filed a civil lawsuit against Singh. So if we go according to the SEC's complaint, Singh was an active participant in the scheme to deceive FTX's investors, and as FTX nearly collapsed, he withdrew approximately $6 million from FTX for personal use and expenditures, including the purchase of a multi-million-dollar house and donations to the charitable causes. It is quite evident that the upcoming trial of Sam Bankman-Fried will see an intense debate between the founders and the 3 comrades, Nishad Singh, Gary Wang, and alleged ex-girlfriend Caroline Ellison. The trial will testify against SBF, hoping for a lighter punishment. As per the current indictments, if SBF is found guilty, he could face a jail term for the lifetime. Well, that's all there is in today's special segment. I am Manoj Dara signing off. For more such updates, keep watching 3.0 TV. Please like and share our videos, subscribe to our channel, and press the bell icon to get instant updates. Thank you. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Good for your soul. Oh, what's up, fellas? I was binge watching all my favorite cartoon episodes after being bored by a rather lame day. I can never get bored of watching cartoons over and over. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Shikha Singh. Growing up, we all must have seen anime or cartoons. Correspondingly, there are prominent cartoons such as The Fairly Odd Parents, Cat Dog, Phineas and Ferb, and Shin Chan. Nickelodeon and Paramount Consumer Products are the masters of cartoons. This is simply a fact. Nicktoons have completely shaped pop culture, from a lovable sea sponge with a meowing pet snail to 4 anthropomorphic turtle brothers named after Italian Renaissance artists. TMNT and SpongeBob went on to become a hit animated TV show, a live-action television series, and numerous blockbuster theatrical releases. SpongeBob was the most watched animated series for nearly 2 decades and now has theatrical releases, consumer products, a Tony Award-winning Broadway musical, and a global fan base.
We just spoke about Nickelodeon and Paramount Consumer Products, and now the duo have partnered with the leading metaverse game provider, GameFAQ. The reason for the collaboration is to bring two classic cartoon franchises, SpongeBob SquarePants and Teenage Mutant Ninja Turtles, to Roblox. Despite Nickelodeon and Paramount Consumer Products' fame among multiple generations, the franchises have a very little presence in the Web3 world. The new Roblox games will include elements from previous launches along with other exciting quests and features. The SpongeBob SquarePants and Teenage Mutant Ninja Turtles Roblox experiences will be separate entities and are both still being developed. Both immersive experiences will launch later in 2023. Roblox is one of the most popular metaverse game platforms. Similarly, Mana is also rapidly gaining ground in the metaverse space. During the intraday trading session on February 20th, one of the largest transactions in the history of leading metaverse-based token, Decentraland, occurred on its network. 256.31 million Mana tokens were moved out of an unknown whale address according to Sentiment, an on-chain data provider. In response to the massive transaction volume, Mana's price increased by 2% in the last 24 hours and trading volume increased by nearly 20% during the same period. Metaverse has always incorporated all aspects of gaming. According to a recent survey, global virtual reality in gaming market growth, trends, COVID-19 impact and forecasts, 59% of industry experts believe gaming will dominate VR investments in the coming years, while 64% believe gaming has the greatest potential for VR when compared to other use cases. Gaming is becoming a bigger industry than movies and sports combined. Loco, an Indian game streaming platform, has partnered with the Avalanche blockchain to create new types of fan experiences. Loco has joined the Avalanche Multiverse Incentive Program and launched a subnet, further expanding Avalanche's growth presence in Asia. Loco is developing a suite of Web3 products that will deliver fan experiences through the Avalanche subnet. The Avalanche subnet will allow Loco to tailor the properties of a custom blockchain to its apps and scale to a user base of hundreds of millions of customers, all while keeping network fees and transactions latency low, the firm said in a statement. That's it in today's special segment. We will keep you posted with more amazing updates in the meantime. For now, keep watching 3.0 TV and subscribe to our YouTube channel for more updates. It's been over 100 years since the unsinkable Titanic began its maiden voyage in April of 1912 to reach the shores of New York City. But unfortunately, it hit an iceberg and sank to the bottom of deep, dark North Atlantic Ocean, killing 1,500 people. Since then, Titanic has captured the imagination of ocean explorers, historians, and the public. Titanic's wreckage, still resting on the ocean bed, continues to reveal a lot of stories. Various deep-sea divers and enthusiasts have journeyed to the depth of North Atlantic Ocean to salvage the wreckage of Royal Mail ship Titanic. The global interest in the Titanic was uplifted when, in 1997, James Cameron released the movie Titanic starring Leonardo DiCaprio and Kate Winslet. My heart will go on and on. Titanic is in the news again as it gets ready to set its sail into virtual Web3 ocean. RMS Titanic Inc., which holds the exclusive rights to recover artifacts
from the ill-fated ocean liner is partnering with NFT and virtual asset management companies to preserve Titanic's assets as immutable NFTs. Hong Kong-based Venture Smart Financial Holdings Limited is partnering with RMS Titanic affiliate Experiential Media Group, which operates Titanic exhibitions throughout the world, to tokenize the property brought up from the ocean floor. The partners say the money raised will fund ongoing research, recovery, and preservation efforts. Artifact Labs, an independent Web3 and NFT company, plans to preserve approximately 5,500 recovered physical artifacts from the Titanic using its NFT standard for historical assets on the blockchain. According to the partners, Titanic NFTs will allow Titanic enthusiasts to digitally interact with RMS Titanic's content outside of the physical exhibitions in Atlanta and Las Vegas that have drawn more than 30 million people. These NFTs are touted to offer exclusive benefits to collectors, including VIP events and exhibitions, seminars with historians, and other exclusive experiences. Artifact Labs is also planning to create the Titanic DAO, allowing members to participate in various initiatives and proposals for future exhibition to the Titanic site. So now future generations can have piece of history as digital collectibles and keep the spirit of Titanic alive by paying homage to the 1,500 departed souls. Meanwhile, the release of underwater footage of Titanic taken by Woods Hole Oceanographic Institution and Massachusetts coincided with the 25th anniversary of James Cameron's film Titanic's release. At this juncture, Oscar-winning filmmaker James Cameron has recreated a controversial climax scene from his classic film Titanic in the hopes of settling a long simmering debate whether Leonardo DiCaprio's character Jack could have survived the historic ocean lining sinking if only girlfriend Rose, played by Kate Winslet, made room for him on a piece of wreckage floating in the icy waters. Fans of Titanic could never settle the debate whether Jack could have survived or not, but one thing is sure, he would not have risked Rose's life to save his own. However, thanks to the efforts of RMS Titanic Incorporated, the timeless pieces of history from the wreckage of Titanic would be available for generations to come through Titanic's voyage to the Web3 ocean. Hello and a very warm welcome to 3.0 TV. I am your host Ruchi Sharma, and today's special segment is about an open royalty war which has finally erupted between leading NFT marketplaces. On 15th February 2023, upstart NFT marketplace Blur announced that it will enforce full creator royalties for any collection that blocks trading on dominant NFT trading platform OpenSea. It seems that Blur is going toe-to-toe with OpenSea in a new chapter of the Web3 royalty wars. Like me, you must be also wondering why an upcoming NFT marketplace like Blur, with a market cap of $406.3 million, is locking horns with the giant like OpenSea with $13.3 billion valuation. Why? Because creators currently can't earn full royalties on both Blur and OpenSea. Instead, they need to choose one to earn full royalties on OpenSea or Blur, but not both. This happens because OpenSea automatically sets royalties to optional when they detect trading on Blur. According to OpenSea, they have this policy to protect both creators and their own bottom line.
So let's understand why Blur decided to declare an open war on its competitor OpenSea. It has something to do with OpenSea's new announcement, which says, in order for full creator fees to be enforced on OpenSea's platform, individuals who created smart contracts after January 2nd, 2023 must take on-chain action to make royalties enforceable. In other words, OpenSea requires creators to use on-chain tools that prevent the sale of NFTs on marketplaces that don't enforce creator royalties. Blur is the royalty-optional platform. As a result, users must block their NFTs from being sold on Blur in order to earn full royalties on OpenSea. If an individual opts not to do this, OpenSea automatically sets royalties to optional on these collections. In short, royalties optional platform like Blur must be blocked or OpenSea makes royalties optional. Blur takes issue with this stance, claiming that creators should be the ones to decide where and how the items are sold, not companies. Well, as of now, it remains to be seen who will win this war. But for now, one thing is clear: creators are caught in the middle. Well, that's it in today's special segment. We will keep updating you about the latest happening in the world of NFTs. Till then, keep watching 3.0 TV. Please like and share our videos, subscribe to our channel and press the bell icon to get instant updates. Have a great day. So finally, some good news for the supporters of technology companies, especially the ones who cater to the Web3 ecosystem. BlackRock, world's largest asset manager, has launched a new metaverse-focused ETF, which is the exchange-traded fund. Recent spat of the cutbacks in technology budget, particularly spending on technology that was looking to harness the virtual world from the likes of Meta, Microsoft, Apple, etc., resulted in investors becoming increasingly suspicious about the prospect of the new age technology. With BlackRock stepping up on the gas, joining the likes of Roundhill Investments, ProShares, and other ETF issuers to compete in the increasingly crowded space could help calm investors' nerves. The iShares Futures Metaverse Tech and Communications ETF offers the investment community exposure to companies providing both the hardware and software used within the metaverse. The metaverse allows consumers to immerse themselves in a virtual world that's interconnected through digital platforms, social media gaming, 3D software, and both augmented and the virtual reality. IVRS trades on the New York Stock Exchange and comes attached with an expense ratio of 0.47%, which is cheaper than most of its competitors' funds. That's what the research analysts have highlighted. The four funds that IVRS will be fighting alongside, which will include the Roundhill Ball Metaverse ETF, ProShares Metaverse ETF, Subversive Metaverse ETF Punk, and the Fidelity Metaverse ETF, which is also called as FMET. FMET is the only fund of the four with a lower expense ratio, as its cost sits at 0.39%. From a holdings perspective, 22.66% of the IVRs is made up of its just four stocks. The top four holdings of IVRs includes Meta Platforms at 6.91%, Apple at 5.73%, Nvidia at 5.53%, and Roblox, which holds a 5.21% weightage. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions.
Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Cryptocurrencies moved in a wider range this week as fears of bank run from the US to Europe pushed investors to safe assets. Bitcoin, the largest cryptocurrency by market value, swung between $22,500 to $26,000 level. Similar moves were witnessed by Ether, the second largest cryptocurrency. The markets have stabilized now to a certain extent, with global central banks from the Federal Reserve in the US and Swiss National Bank coming to the bank rescue. Bitcoin has reclaimed psychologically important level of $26,000, while Ether has its eyes set on $1,750. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ह्यू हेफनर के प्लेबॉय की पेरेंट कंपनी PLBY ग्रुप ने कहा कि उसने पिछले साल हेल्ड किए इथेरियम पर $4.9 मिलियन की हानि का नुकसान उठाया है, क्योंकि क्रिप्टो विंटर में ब्रॉडर मार्केट प्राइसेस में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। गुरुवार की एक एनुअल फाइलिंग के अनुसार लाइफस्टाइल और मीडिया कंपनी ने कहा कि उसने इथेरियम को 2021 में लॉन्च किए गए अपने राबिटर्स नॉन फंजिबल टोकन के पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया, जिसे उसने अपनी बैलेंस शीट में डिजिटल एसेट्स के रूप में होल्ड किया है। फाइलिंग में कहा गया है कि डिजिटल एसेट्स की वैल्यू पिछले साल की तुलना में $327,000 है। Moving on, the Federal Deposit Insurance Corporation denied it would require any purchaser of Signature Bank to divest its crypto activities. The FDIC responded to a Wednesday Reuters report that said any buyer of Signature must agree to give up all the crypto business at the bank, citing two unnamed sources. An FDIC spokesperson denied this to Reuters. An FDIC spokesperson said in an email that the receivership does not end until all the bank's assets are sold and all the claims against the bank are addressed and the acquirer decides the conditions of their bid. Reuters reported that an FDIC spokesperson told the news service that the agency would not require divestment of crypto activities as part of any sale. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लेंडिंग प्रोटोकॉल और स्टेबल कॉइन इशू मेकरडाओ ने 16 मार्च को यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी बॉन्ड की अपनी पोर्टफोलियो होल्डिंग को 150% बढ़ाकर $500 मिलियन से $1.25 बिलियन करने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव का उद्देश्य रियल वर्ल्ड एसेट्स और हाई क्वालिटी बॉन्ड्स के लिए प्रोटोकॉल के जोखिम को बढ़ाना है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण 11 मार्च को इसकी डाई स्टेबल कॉइन ने अपना $1 पेग खो दिया था। मेकर के 77% प्रतिनिधियों द्वारा $750 मिलियन डेट सीलिंग हाइक अनुमोदित किया गया था। बॉन्ड्स इक्वल मैच्योरिटीज के साथ खरीदे जाएंगे और हफ्ते में 2 बार और 6 महीने की अवधि में हर $62.5 मिलियन के टोटल 12 स्लॉट होंगे। स्ट्रैटेजी के तहत मेकरडाओ ने कहा कि हिरासत के बाद 4.6% से 4.5% की नेट एनुअलाइज्ड यील्ड देने की उम्मीद है और प्रस्ताव में कहा गया है कि मेकर की रेवेन्यू स्ट्रीम को ट्रेडिंग कॉस्ट से भी बढ़ाया जा सकता है। Moving on, LinksDAO, a Web3 community formed with ambitions to purchase a real-world golf course, said Thursday that it has agreed to do just that. It claims to have secured the winning bid to purchase Spey Bay Golf Club, an oceanside 18-hole golf course in Scotland. While the deal terms have not been disclosed, the over 100-year-old Spey Bay course was listed with an expectation of receiving bids over 750,000 GBP or nearly $910,000. Golf Digest reports that the deal may close higher than the list price. The deal is expected to be finalized in the coming weeks. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निष्क्रिय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के साथ बिजनेस करने वाले इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप ने बुधवार को कई इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एक क्लास एक्शन का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंटेंट क्रिएटर्स ने कोलैप्स्ड एक्सचेंज को बढ़ावा देने के दौरान अपने व्यूअर्स और फॉलोअर्स पर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को पुश किया। मुकदमा $1 बिलियन से ज्यादा के डैमेजेस की मांग करता है और बिटबॉय, क्रिप्टो क्रिएटर बेन आर्मस्ट्रॉन्ग और फाइनेंस यूट्यूब क्रिएटर ग्राम स्टीफन सहित 7 अन्य व्यक्तियों और टैलेंट मैनेजमेंट फर्म क्रिएटर्स एजेंसी सहित लाखों ऑनलाइन तक पहुंचने वाले कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ लाया गया था।
Moving on, Marathon Digital Holdings said that revenue for the fourth quarter of the year declined 58% from the same period a year earlier to $28.4 million. The Bitcoin miner had been expected to report revenue of around $38.4 million for the quarter. The company last month cancelled an earnings call and postponed the release of the result to correct accounting errors that related to the impairment of digital assets. In the newly released report, full-year revenue for 2022 declined 26% to $117.8 million from a restated $159.2 million in 2021. The company recorded a net loss of $686.7 million for the year compared to a loss of $37.1 million in 2021. Bitcoin production was up 42% in the fourth quarter to a record 1,562. On an annual basis, production increased 30% to 4,144. That's all for now. This is me, Ruchi Sharma, signing off. And this is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such updates, keep watching 3.0 TV. Do like, share and subscribe to our channel. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. And I am Ruchi Sharma. Bitcoin reclaims $26,000 amid perky risk appetite. Cryptocurrencies moved in a wider range this week as fears of bank run from the US to Europe pushed investors to safe assets. Bitcoin, the largest cryptocurrency by market value, swung between $22,500 to $26,000 level. Similar moves were witnessed by Ether, the second largest cryptocurrency. The markets have stabilized now to a certain extent with global central banks from the Federal Reserve in the US and Swiss National Bank coming to the bank rescue. Bitcoin has reclaimed psychologically important level of $26,000 while Ether has its eyes set on $1,750. And now let's cut across to Manoj Thara to get an insight on the global cryptocurrency market. Absolutely. SVB Financial Group has actually filed for the Chapter 11 bankruptcy protection and at the similar time, Bitcoin has actually crossed $27,000 mark. Bitcoin soared to over $27,000 as the news came out, and markets also reacted to the Federal Reserve's decision to pump in liquidity into the US economy, which is actually seen struggling by the analysts. The bank's issues became known last week when it announced the sale of billions of dollars worth of its portfolio, realizing a loss of $1.8 billion, as we have extensively covered this issue on 3.0 TV. As its stock tumbled, the FDIC had to intervene and halt trading. Since then, a few more US banks have come under the spotlight with similar issues. And while reports emerge that several watchdogs have launched a probe into the SVB, this is actually a time when we are seeing the US economy taking a backseat because of this issue. The struggling banking system has actually benefited the entire cryptocurrency market, and Bitcoin we have seen soaring past $27,000 mark, which is actually the first time since June 2022. So crypto markets have given a big thumbs up, and many analysts are actually talking about it on social media, wherein it's saying that Bitcoin is now the hedge against inflation. That's a long shot, although, but only time will tell. But here you can see which cryptocurrency companies had some sort of exposure to SVB as well as the Signature Bank, and which is actually another struggling bank organization, are feeling the pressure, and cryptocurrency markets will keep an eye on all the movements which is actually there in the US markets, and the fate will be decided in the upcoming week. Thank you.
Thank you, Manoj. Moving on Saturday, India's crypto industry pulled off a near coup by bringing lawmakers and members of India's ruling party to a conference discussing Web3. Indian exchange CoinDCX, backed by the industry's policy body Bharat Web3 and in media outlet Forbes, brought lawmakers to an event titled Namaste Web3 at one of Delhi's 5-star luxury hotels to discuss India's G20 presidency and potential opportunities for India in the Web3 sector. The conference managed to bring senior leaders from India's ruling party, National Vice President Baijayant Panda and former Law Minister Ravi Shankar Prasad to an event. From the opposition benches, it brought a chairperson of the Parliamentary Standing Committee on Commerce and a deputy leader of the Parliament's lower house. While lawmakers and government officials have privately had wide-ranging consultations with the industry, this was a rare occasion where they've publicly shown up, lending the space a fresh legitimacy. Web3 is important with a caution come out of the shadow of crypto, said Prasad, who has also been a former information technology minister. तो विशाखा एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है, क्योंकि हम देख तो रहे हैं, हालांकि बजट में कुछ नहीं कहा गया क्रिप्टो करेंसीज को लेकर या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर, लेकिन अभी जैसे G20 की प्रेसिडेंसी के पहले भी एक बैंगलोर में मीटिंग हुई थी, तब भी कुछ खास वहाँ से निकल कर नहीं आया था, लेकिन अब पता चल रहा है कि भारत Web3 और जो कि ऑलरेडी इट्स बैक्ड बाय CoinDCX और फोर्ब्स जो है ने पूरा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया था, और दिल्ली के एक लग्जरी होटल में लॉ मेकर्स थे, मेंबर्स थे फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, और लोगों ने जो G20 प्रेसिडेंसी को लेकर ही और थोड़ा सा Web3 को लेकर जो है बातचीत की है, और आई थिंक बहुत से आगे डिसीजंस बनाए जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा, मैं कहूँगी इसको पॉजिटिवली हम देख रहे हैं कि हम चाहते ही हैं कि कुछ Web3 को लेकर या क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कुछ अच्छे रेगुलेशंस लाए जाएँ, कुछ रूल्स लेकर आए जाएँ, कुछ ऐसे हों, एक मापदंड हो जिस पर सब लोग चलें ग्लोबली, तो उनके ऊपर थोड़ी बातचीत अब हो रही है खुलकर, और इस तरह के इवेंट की बात भी हो रही है। जी, तो इसमें जैसे कि आपने बताया कि बातचीत अब खुलकर हो रही है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि बैजयंत पांडा जी और जो रवि शंकर है, दोनों ही लीडर्स ने ये चीज़ भी कही है हालांकि कि जो Web3 है क्रिप्टो इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेकिन एक कॉशन के साथ, तो यानी कि वो एक इम्पॉर्टेंस तो दे ही रहे हैं Web3 को, विच इज़ एक्चुअली अ गुड मूव अहेड ऑफ द G20 presidency. Moving on, India's Enforcement Directorate is investigating several crypto cases for money laundering schemes and has seized $115.5 million to date in such crimes, the Ministry of Finance said. The latest in a series of crackdown by the authorities on the nascent space that is already reeling from the tumultuous market conditions. The Indian Crime Fighting Agency has also arrested 5 individuals in crimes abetted by cryptocurrency and in the past sent a show cause notice to local exchange WazirX and its directors for crypto transactions exceeding $338 million, the ministry said. The disclosure comes at a time when India is pushing ahead with rules to better scrutinize the activities of cryptocurrency firms, even as until now, New Delhi has resisted formulating a blanket law to regulate the virtual digital assets. Last week, the Ministry of Finance said that crypto will be governed by anti-money laundering rules in the South Asian market. Under the new change, crypto exchanges, NFT providers, and custody wallet operators will be responsible for monitoring suspicious financial activities. तो यहाँ पे जितनी भी सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, पहले भी निर्मला सीतारमन ने पहले भी ये कहा है कि जो क्रिप्टो है वो काफ़ी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग और ये ट्रैफिकिंग में यूज़ होता है, और अब यहाँ पे एक रिपोर्ट जो सामने आया है, ये जो आंकड़े सामने आए हैं, वो 115.5 मिलियन डॉलर्स जो है वो इतना बड़ा अमाउंट सीज कर लिया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, और साथ ही 5 इंडिविजुअल्स को भी अरेस्ट किया गया। तो बेसिकली जो ईडी का शिकंजा जो था वो क्रिप्टो की तरफ ज़्यादा तब बढ़ा जब ये चाइनीज़ लोन ऐप का पूरा मामला सामने आया, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए जो है देखे गए कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू जो है कंट्री से बाहर जा रहे हैं। उसी के चलते WazirX पर भी जो है उन्होंने उस पर रेड की थी ईडी ने। तो अभी आई थिंक उसी की तरफ चल रही है पूरी जांच, ताकि क्रिप्टो देखो कहीं ना कहीं क्रिप्टो से जो एक ऑपोजिशन आ रही है, जो रेजिस्ट कर रही है आरबीआई या फिर पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो इसीलिए क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग के में थोड़ा
इसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखता involvement है, है। तो जितना ज़्यादा ईडी इस पे अपने खुद को थोड़ा सा इस चीज़ पे अपना शिकंजा रखेगा, उतना ही ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम होंगी जी। दैट्स ऑल्सो गुड। और अभी हो सकता है कि काफ़ी आगे काफ़ी कुछ सामने भी आए और एक्सचेंजेस पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। Moving on. According to an announcement made on Wednesday, India and the United Arab Emirates will collaborate on central bank digital currencies by conducting joint pilot. In Abu Dhabi, the Reserve Bank of India and the Central Bank of the UAE signed a memorandum of understanding. The central banks will investigate interoperability between the two countries' CBDCs. The banks will also conduct joint proof of concept and pilot of bilateral CBDC bridge to facilitate cross-border CBDC remittance and trade, according to the statement. तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रेसिव मूव है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर एक्चुअली में इंडिया और यूनाइटेड यूएई के बीच में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सीबीडीसी को लेकर होती है, तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू डू सो, बिकॉज अभी फिलहाल यूएस यूके ये भी इन सब में पीछे हैं। हालांकि वो काम कर रहे हैं सीबीडीसी की तरफ, लेकिन इंडिया ने ऑलरेडी सीबीडीसी लॉन्च कर दी है ना। और यहाँ पर चाहे वो रिटेल की बात करें, होलसेल की बात करें, उसमें सीबीडीसी ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, चल रही है, और अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की बात हो रही है, तो वेरी वेरी पॉजिटिव एंड गुड। बिल्कुल, तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की बात हुई और उसके बाद जो क्रॉस बॉर्डर सीबीडीसी रेमिटेंस जो है, तो ये बहुत अच्छा मूव है और बहुत ही प्रोग्रेसिव मूव है। Moving on, Meta, the parent company of Instagram and Facebook, is winding down its integration of non-fungible tokens on its platform. Stephen Kasriel, Meta's head of Commerce and Financial Services, wrote in a Twitter thread on Monday that the shutdown will allow the company to focus on other ways to support creators, people, and businesses. Kasriel specified that Meta won't give up on its mission to help creators connect with their fans and will pivot focus on other products such as Reels for messaging and monetization. Meta will also continue to work with NFT and Web3 content creators who leverage its suite of tools to help them grow their community. तो यहाँ इस हफ्ते एक बड़ा अपडेट आया जहाँ मेटा ने अपना जो NFT की तरफ जो एक सपोर्ट था वो बंद कर दिया, क्योंकि वो मेटा पे फोकस करना चाहते हैं। और जो अभी सिर्फ कुछ ही टाइम हुआ था, लगभग 10 महीने शायद हुए थे इन्हें, इनका जो NFT है वो अलग अलग कंट्रीज में इन्होंने 100 देशों में पहले लास्ट ईयर मई में उन्होंने लॉन्च किया ये NFT फीचर। उसके बाद अगस्त में 100 कंट्रीज में NFT मिंटिंग एंड ट्रेडिंग शुरू कर दी, विच वाज वेरी पॉजिटिव। और हमें यही लग रहा था कि मेटा इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा टेक जायंट है, तो आई थिंक NFTs को बूस्ट मिलेगा इससे। लेकिन इट वाज एक्चुअली शॉकिंग कि वजीर एक्स ने पहले अपनी NFT मार्केट प्लेस बंद कर दी और अब मेटा ने अपना ये NFT टूल जो है वो बंद कर दिया। और जहाँ तक दिख रहा है जो मेटा का रुझान है वो थोड़ा सा रील्स को मोनेटाइज करना और अपने बाकी क्रिएटर्स के लिए उनके वर्क को मोनेटाइज करना, मेटा पे की तरफ ध्यान जो है उनका ज़्यादा है। और साथ में ये तुम जानते ही कि जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है मेटावर्स, जो रियलिटी लैब्स है, उन पर उनका पूरा फोकस है। जी, लेकिन उस आपने बताया कि उस पर फोकस है, लेकिन अब उससे भी वो AI की तरफ जो एक शिफ्ट ले रहे हैं। और उसके बाद एक और बड़ा अपडेट यहाँ पे आया जब 10,000 का फिर से ले ऑफ हुआ मेटा के थ्रू, क्योंकि नवंबर में भी 11,000 यानी कि 13% वर्कफोर्स को निकाला गया था और अब फिर से 10,000 लोगों को मेटा ने निकाला है, क्योंकि वो कहता है कि ये ईयर ऑफ एफिशिएंसी है। तो इसमें जो इनके लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनसे ये थोड़ा ध्यान हटाकर जो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है उस पर फोकस करना चाहता है। So moving on, decentralized lending protocol Euler Finance will offer a $1 million reward for information about the attackers behind its nearly $200 million exploit that occurred Monday. In on-chain messages sent from Euler's deployer contracts, deployers said, following up on our message from yesterday, if 90% of the funds are not returned within 24 hours, tomorrow we will launch a $1 million reward for information that leads to your arrest and the return of all funds. The lending protocol suffered an exploit on Monday that resulted in almost $200 million being lost over 4 transactions in DAI, wrapped Bitcoin, staked Ether, and USDC. The attacker used a flash loan to conduct the attack by temporarily tricking the protocol into falsely assuming it held varying amounts of E-token and D-token. Euler's native EUL token continued sliding from the second day, falling 16% in the past 24 hours, CoinGecko data shows. According to on-chain data compiled by security firm Blocksec, the Euler Finance attacker attempted to launder stolen funds by transferring 1,100 ETH worth $1.8 million to cryptocurrency mixer Tornado Cash. तो यहाँ पे Euler Finance पे जो है $200 million का एक
जी, एक्सप्लॉइट हुआ तो उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि अगर 90% पहले उन्होंने ऐसे ही कोशिश की कि हैकर अगर अपने आप से 90% जो है रिटर्न कर दे, जो हुआ नहीं, फिर उन्होंने $1 मिलियन का रिवॉर्ड भी रखा कि अगर ऐसा आप 90% नहीं रिटर्न करते तो हम किसी ना किसी को रिवॉर्ड देंगे जो आपका अरेस्ट करा पाए और रिटर्न करा पाए रिफंड। लेकिन अभी फिलहाल लगता है कि हैकर किसी भी माइंड में नहीं है रिटर्न करने के लिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी $1.8 मिलियन के जो ये टोकन्स थे उनको ऑलरेडी टोर्नेडो कैश में कन्वर्ट कर दिया। एंड वी नो दैट एक बार जो पैसा गया टोर्नेडो कैश में फिर उसको कोई भी रिकवर नहीं कर सकता, ट्रैक नहीं कर सकता है। और ये जो $200 मिलियन की जो ट्रांजैक्शंस हुई वो 4 जैसे कि डाई में हुई और रैट बिटकॉइन, स्टेक डीथर और USDC में हुई। Moving on, Circle, the stablecoin issuer, announced on March 10th that $3.3 billion in cash deposits remained at Silicon Valley Bank, the lender that had been shut down earlier in the day by regulators due to a run on deposits. This amount accounts for approximately 8% of total reserves backing Circle's stablecoin USDC. Circle held a portion of the reserve assets backing its $40 billion USDC stablecoin with Silicon Valley Bank, one of 6 banking partners. USDC is the market's second largest stablecoin and a critical component of the crypto ecosystem. Concerned investors redeemed over $1 billion of USD tokens causing USDC to temporarily lose its dollar peg on some exchanges and pushing the largest stablecoin swap pool on the decentralized finance platform Curve into heavy imbalance. तो सर्कल के यहाँ पे जो कुछ एसेट्स हैं यानी कि $3.3 बिलियन के वो सिलिकॉन वैली बैंक में फंस गए। तो सिलिकॉन वैली बैंक का पता ही है हमें कि काफ़ी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, तो शट डाउन कर दिया। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स थे इसमें उनको उनके बीच में एक कंसर्न आया और उन्होंने कम से कम $1 बिलियन के जो अपने USDC थे वो निकाल लिए। और ऑब्वियसली जब उन्होंने ये भी कहा जा रहा है कि ये जो USDC उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं 1 बिलियन वर्थ के, तो उससे एक तो USDC जो है वो डीपेक हो गया था बीच में, और दूसरा उस फंड्स को जो है बिटकॉइन में लगाया जा रहा है थ्रू इन्वेस्टर्स। इसीलिए बिटकॉइन की जो वैल्यू फिलहाल वो काफ़ी ऊपर है, $26,000 से ऊपर है बिटकॉइन। तो आई थिंक ऐसा कई बार होता है कि जो मार्केट में बड़ी हलचल होती है उससे मार्केट सेंटिमेंट सेट होता है और हम देखते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा जो कैश है वो मार्केट से निकाल लिया जाता है या पंप इन कर दिया जाता है। दैट्स हाउ वी सी द एंटायर अप एंड डाउन द मूवमेंट इन द प्राइसेस। So moving on, HSBC Holdings said that its UK ring-fenced subsidiary HSBC UK Bank is acquiring Silicon Valley Bank UK for £1 as per a filing. As of March 10th, SVB UK had loans of around $6.6 billion and deposit of around $8.1 billion, the filing read. The sale announced Monday was facilitated by the UK government under the resolution powers designed to wind up failing lenders without destabilizing the financial system. Late Friday night, the Bank of England tweeted that SVB UK would be put into insolvency, but that the lender had a limited presence in the country. US regulators on Sunday said that SVB depositors would be made whole and be able to access funds as of Monday as they seek to stop the biggest bank failure since 2008 from undermining confidence in the financial system. तो यहाँ पर जो SVB बैंक है उसको एक तरह से बचाने के लिए SVB बैंक की जो UK सब्सिडरी है उसको बचाने के लिए HSBC ने उसे एक्वायर कर लिया और वो भी सिर्फ £1 में। और ये मैं कहूँगी एक तरह से HSBC के लिए अच्छा था, क्योंकि अगर हम देखें तो SVB बैंक के जो लोन थे वो $6.6 मिलियन थे और जो उसका डिपॉजिट था वो 8.1 बिलियन डॉलर था। बट क्योंकि रेगुलेटर्स ने ऑलरेडी शट डाउन कर दिया SVB को, तो SVB तो ऑपरेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो डिफरेंस भी एक्चुअली मैटर नहीं करता कि ऐसा नहीं हो पाता कि वो अपने लोन्स पे ऑफ कर फिर भी अपना आगे ऑपरेशंस जारी रखता। तो एनीवेज HSBC ने उसको अक्वायर कर लिया और जो गवर्नमेंट है UK गवर्नमेंट है वो इसे सपोर्ट कर रही है और फैसिलिटेट कर रही है कि इट्स अ गुड मूव कि कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी में कोई बैंक या कोई कंपनी बंद ना हो और कहीं ना कहीं उससे सपोर्ट करके ऑपरेशन जो है चलते रहे। जी, तो बहुत फ़ायदा यहाँ पे HSBC को हुआ है देखा जा सके तो। बिल्कुल। Moving on, Play Today, a Web3 golf company, has added 2 of the world's largest golf equipment brands, Callaway and Adidas Golf, to its world-first golf metaverse, which will debut with the NSW Open Golf Championship.
During the NSW Open, which will be held at Rich River Golf Club in Muama, NSW from March 16 to 19, both companies will launch innovative new interactive brand experiences in the metaverse. Augmented reality will allow players to virtually view the most cutting-edge physical golf products from the comfort of their homes. The event is predicted to bring in over 20,000 viewers a day or 80,000 over the course of the 4-day tournament, all of whom will be able to virtually experience in 3D the 2 largest golf brands in the world plus so much more. तो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं दे आर एम्ब्रेसिंग मेटावर्स और अब यहाँ गोल्फ भी मेटावर्स में आ गया है। तो ये जो चैम्पियनशिप होने वाली है मार्च 16 से 19 के बीच में, तो ये 4 दिन के इवेंट में ये कहा जा रहा है कि इस पार्टनरशिप के थ्रू कम से कम 20,000 नहीं तो पूरे 4 दिन के बाद तो कम से कम 80,000 जो व्यूअर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पूरा देख सकते हैं सारी इक्विपमेंट्स को, वो 3D वर्ल्ड में देख सकते हैं। और वैसे भी हमने स्पोर्ट्स के लिए लोगों की दीवानगी देखी है, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है वो अलग ही होती है, इसलिए फ़ैन टोकन्स इतने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं। तो आई थिंक मेटावर्स पे भी जब ये एंटर कर रहे हैं तो इसे भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। बिल्कुल। So moving on, Matrix Partners led a $7 million seed funding round for Web3 art platform Wild. Gwyneth Paltrow, Reid Hoffman and Kevin Lin, co-founder of Twitch, also participated in the round, which closed late last year, according to Wild founder and CEO J. Douglas Cobbs in a written interview with the blog. The startup refused to reveal its valuation. The startup will use the funding to further build out its residency and invest in infrastructure to power its experiential art. Many of Wild's collections can be accessed through in-browser experiences without needing to connect a wallet. तो यहाँ पर gwyneth paltrow इतनी बड़ी हॉलीवुड स्टार हैं, अब उन्होंने भी Web3 में एंट्री कर ली है एंड इस प्रोजेक्ट को, वाइल्ड प्रोजेक्ट को उन्होंने भी थोड़ा बैक किया है. शी हैज़ ऑल्सो गिवन हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फंडिंग. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड एक्सपीरियंशियल आर्ट की बात कर रहे हैं तो एक्सपीरियंशियल NFTs या एक्सपीरियंशियल आर्ट जो होता है जहाँ पे आप कुछ एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं. यू नेवर नो, इसमें एक फ़ैन टोकन का एंगल भी ऐड कर दिया जाए और कल को जो फैंस हैं वो gwyneth paltrow से मिल पाए. बिल्कुल. तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो Web3 स्पेस में एंटर कर रहे हैं और क्योंकि इट इज़ स्टिल Web3 इज़ ड्राइविंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू द इकोनॉमी. तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये नंबर और ज़्यादा बढ़ जाए और Web3 को और ज़्यादा बूस्ट मिले. That's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.2 TV and have a great day. हेलो एंड वेलकम टू 3.2 टीवी. मैं रोशनी शिंगरे. आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन और रेलवे इंडस्ट्री के बारे में. ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सप्लाई चेन, बैंकिंग, हेल्थ केयर और दूसरी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है. ऐसे में अब ये ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में भी क्रांति लाने के राह पर है. जी हाँ, आज हम बड़े ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे एक पायदान ऊपर ले जाते हुए ब्लॉकचेन की मदद से अधिक स्मार्ट, डिजिटल और डिसेंट्रलाइज बनाया जा सकेगा. हर साल ग्रो हो रही रेलवे इंडस्ट्री ब्लॉकचेन टेक्निक का अगला लक्ष्य है, जहां यह अपना जबरदस्त प्रभाव से रेलवे को रेनोवेट करेगी. दुनिया भर में मौजूद देशों में से कनाडा, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट और चिली को छोड़कर कई देशों में रेल नेटवर्क अभी भी मैनुअल ऑपरेशंस के कंट्रोल में है. मैनुअल ऑपरेशंस को कुछ महत्वपूर्ण कन्वेंशनल रेलवे सॉफ्टवेयर्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है. हालांकि इन सब के बीच चिंता का विषय यह है कि सॉफ्टवेयर पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन नहीं होते हैं. यही वजह है कि अक्सर ऑपरेशंस में अनएक्सपेक्टेड इश्यूज जैसे एक्सीडेंट्स, टिकट बुकिंग को ट्रैक करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है. ऐसे में चलिए आज हम रेलवे में मौजूद उन छिपे हुए मुद्दों के बारे में बात करते हैं जिन्हें ब्लॉकचेन हल करने वाला है. सबसे पहले बात करते हैं आखिर क्यों है ब्लॉकचेन रेलवे इंडस्ट्री के लिए जरूरतमंद. हमेशा होने वाले रोड ट्रैफिक से रेलवे ट्रैफिक पूरी तरह से अलग होता है.
रेलवे में इंटरकनेक्टेड नैरो रेलवे ट्रैक्स होते हैं जो अलग अलग ट्रेनों को अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए अलग अलग समय पर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करते हैं। ऐसे में मेन लाइन रेलवे सिस्टम में सख्त सुरक्षा प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए अलग अलग टेक्निकल फ्रेमवर्क्स होते हैं। ऐसे में रेलवे में ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंटेशन को कन्वेंशनल रेलवे फ्रेमवर्क्स द्वारा बनाए गए मौजूदा सेफ ब्लॉक्स को इंश्योर करने की जरूरत है। इन सभी एलिमेंट को मद्देनजर रखते हुए अब भारत के कर अधिकारी ब्लॉकचेन तकनीक की मदद से सीमा शुल्क कर काटने के रूप में रेल कार्गो को स्कैन कर रहे हैं ताकि होने वाली अवैध तस्करी को कम किया जा सके। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन विवेक जौहरी का मानना है कि केवल कर दरों को बढ़ाने या घटाने से अवैध व्यापार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। साथ ही इंडिया का सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने पर विचार कर रहा है। यह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंटेनर्स को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैगिंग के एक्सटेंसिव उपयोग के साथ मिलकर CBIC को सभी टोल प्लाजा सहित कार्गो को एंड टू एंड ट्रैक करने में भी मदद करेगा। दूसरी बात, रेलवे नेटवर्क में क्या है ब्लॉकचेन की जिम्मेदारी। रेलवे नेटवर्क में ब्लॉकचेन की टॉप मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऐसे में ब्लॉकचेन को सिक्योरिटी लेवल को सुनिश्चित करने से लेकर लोगों की जान को एक्सीडेंट से बचाने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग सिस्टम के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत है। अब देखते हैं रेलवे में कैसी हो सकती है ब्लॉकचेन की भूमिका। रिवॉर्ड पॉइंट्स। अगर रेलवे नेटवर्क में ब्लॉकचेन को लागू किया जाता है तो यात्री हर बार टिकट खरीदने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा कर सकते हैं। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का रिडेम्पशन कुछ डिफाइंड पॉलिसीज के तहत लिखा जाएगा। क्लेम किए गए रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल ट्रेन यात्रा के बाद कैब जैसी दूसरी सेवाएं हासिल करने के लिए किया जा सकता है। ब्लॉकचेन रेलवे के सिस्टम के अंदर ज्यादा डेटा ट्रांसपेरेंसी लाता है, जिसकी मदद से यात्रियों की आइडेंटिटीज को मैनेज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन के साथ सब कुछ ऑनलाइन दर्ज होगा, जिस वजह से यात्रियों को यात्रा करने के दौरान कोई ID प्रूफ साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंटेनेंस। चूंकि हर ट्रेन हजारों टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट से जुड़ी होती है, इसलिए सुरक्षा यात्रा के लिए ट्रेन का रखरखाव बहुत जरूरी होता है। ऐसे में किसी भी तरह की खराबी को पकड़ना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन IoT कनेक्ट सेंसर और डिवाइसेस के साथ ब्लॉकचेन मॉडर्न मेंटेनेंस को बढ़ावा देगा, क्योंकि ट्रेन का हर एक पार्ट ब्लॉकचेन के तहत रजिस्टर्ड होगा। ऑटोमेटेड बिलिंग। ब्लॉकचेन के साथ रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर राइट्स का एलोकेशन शुरू हुआ ब्लॉकचेन का